So, Jai Jagannath and welcome to StudyIQ session. In this today's session, we will go through the Indian geography in depth but in brief. I will go through this Indian geography in a single video. This may take times like 2 to 3 hours, but it will be fast with precise and broad as well. Right? It would be fast, precise and broad, and with some important areas will be given more importance, because you know covering Indian geography within 2 to 3 hours is always difficult, but I will try to cover at least within 3 hours, and now but 3 hours you will be with me. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. Good evening to all and let's begin the session. Indian geography, this would be Indian geography short notes for the prelims. Any prelims you are referring for the any states, from the any states, that does not matter, but that will be helpful for you, right? Even UPSC. Prepared by me, Sibasankar Hazara. You can join the telegrams, my personal telegrams, OS mentor, or you can also join StudyIQ OS, OPSC. चलो फिर telegram channel is here and you can also join what OPSC wala, that means not OPSC wala, it's a what StudyIQ OCS telegram channel. Now it comes to the what fast, I will comes to the geology of India. Good evening everyone. चलो फिर start करिबा, लेट करिबा नहीं हो, no late, let's begin. First we will go through the geology of India. In the geology of India, that means see the geology, this is the map of India, the geology map of India. This one is what the geology map of India. First go through the geology map of India so that you will have at least the sense of idea will comes what is the geology of India. When I say geology of India, I means I am talking about the rocks of India. I means what I am talking about the rocks of India, and that is very important, the rocks of India. So this is the geology, the rocks of India. What is the geology, where is the fault, where is all these things we will cover, right? In the geology of India, that means India is generally, I will say, there would be sedimentary rocks, there would tertiary, there would metamorphized, there would igneous, so different kind of rocks are there, right? Different types of rocks are there. These are, you can see, the Precambrian rock, that is the what metamorphic rock. Here is Gondwana rock. These are the what pink color Gondwana rock. They are what? They are the Gondwana and Vindhyan rock. Here is Vindhyan rock. This Gondwana rocks is what? Again, it's a sedimentary, but this Precambrian rock here is the called as the basement rock of India. This is what the basement rock of India. So first of all, let's say going through from here, I will start from here, the geology of India. When we say geology of India, let me zoom it, right? Let me zoom it fast. When I say geology of India, the definition, geology is the what? Study of earth. This is what study of earth, structure, material, process that shape it. So that means what is the structure of India? What is the process that shaped the structure of what India? And all that सारे के सारे जो ना, right? So that is very important for us, right? कैसे बना, कि इतने सारे रॉक है, कहाँ पे फॉल्ट है, अर्थ के क्यों होता है, हिमालय पे क्यों ज़्यादा अर्थ क्विक होता है, ये सारे के सारे इसमें आपका कवर हो जाएगा, राइट? ठीक है, चलो फिर. सो जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ रॉक, right? Everything that would be. So we are having diverse rock formation, tectonic history and the minerals wealth, that will be also there. So geology unique due to what? The diverse rock formation, tectonic history and the minerals wealth, or everything would be studied under the geology. तो यहाँ से ना क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, कैसे? जैसे कि एक बार पूछा था कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ पे है. तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो हमें क्या होता है ना, दिक्कत होता है पूछने में, मतलब हाँ सुनने में तो दिक्कत होता है कि भाई ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ पे है. जैसे कि हम जैसे जब हम हिमालय पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे इंडो टाइबेटियन सूचर जन है, सेंट्रल थ्रस्ट है, मिडिल बाउंड्री वहाँ पे है, फ्रंटल थ्रस्ट है. तो जैसे कि हम थ्रस्ट बोलते हैं, अदरवाइज यू मे से फॉल्ट लाइन्स, दैट इंडो बट दैट इज द टाइबेट or Indo-China suture zone. Then there would be central thrust, there would be middle boundary, there would be frontal boundary thrust are there. So likewise, the major geological division of India is Peninsular of India, Himalaya, Indo-Gangetic and the islands. So geologically, India is divided largely like this. This is what geologically India is divided into 4 types. The geological, this is the division of, that means each of this section is formed in a different manner, in a what's different unique way, or I would say in a unique way.
राइट. ईच ऑफ दिस, ये पूरा का पूरा जितना देख रहा हो ना, तो जियोलॉजिकली वी हैव डिवाइडेड इंडिया, दैट इज वी हैव नॉट डिवाइडेड, दैट इज जियोलॉजिकली इंडिया इज डिवाइडेड, is not कि human or I, you, somebody else that has divided this. This is क्योंकि ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है ना, इनका फॉर्मेशन यूनिक है. जैसे कि ये ले लो कि पेनिनसुलर ऑफ इंडिया, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका जो फॉर्मेशन, इसका जो रॉक स्ट्रक्चर, वो कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द हिमालय. हिमालय इज प्रेटी यंग है, वो पूरा यंग है, यंग फोल्ड माउंटेन बसा हुआ है, वहाँ पे पूरा टेक्टोनिक इफेक्ट वाज देयर. सो चलो फिर, तो जियोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो चार भाग में इसको डिवाइड किया गया. तो फर्स्ट वन वुड बी पेनिनसुलर ऑफ इंडिया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द ओल्ड क्रेटन्स. So these are like Singhbhum cratons, like you will have what Brosther cratons, you are having Karnataka, that is Dharwar craton is there, that is Vindhyan craton is there, Aravalli craton is there, the small craton also there. So cratons are what? The oldest rock, the first time that solid and solidified to forms a rock. Cratons also there. So this peninsula sealed the oldest craton. These are what cratons are there. Most of the southern and the central India composed of ancient crystalline rocks, granite, gneiss and schist. Schist कहाँ से बनता है? सेल से. gneiss कहाँ से? ग्रेनाइट से बनता है, राइट. यहाँ से ये सबको तो पता है. मिनरल रिच, बहुत सारे मिनरल्स, एंड दैट इज व्हाई योर पेनिनसुला इज रिच इन मिनरल्स. व्हाई? बिकॉज ऑफ द रॉक स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द रॉक स्ट्रक्चर. क्योंकि मिनरल्स कहाँ पे मिलेगा? रॉक पे. एंड द टाइप ऑफ रॉक विल डिटरमाइंस द टाइप ऑफ मिनरल्स, and that is why the iron, manganese, copper, gold, all these things are associated with the type of rock, with a special type of rock, right? Good evening, Birbal, Sasmita, Kalia, everyone, right? And Himalaya, now comes to the Himalaya, but we will go through in the detail, right? We will go one by one. Now we will comes to Himalaya. Himalaya is a what? Young fold mountain. So Himalaya is a what? Young fold mountain. Now here peninsula, this peninsula is extension. अगर कोई भी पूछ लेना कि भाई पेनिनसुला क्या है, कहाँ से कहाँ तक आता है, तो पेनिनसुला जो आपका पेनिनसुलर इंडिया होता है ना, उसको थोड़ा एक बार देख लो कि आपका ये जो पेनिनसुलर इंडिया होता है, राइट, फ्रॉम अरावली टू लेके पूरा ये मेघालय प्लेटो, right, this is your peninsular India. This one is the map of peninsular India, includes your desert. ये जो राजस्थान इंक्लूड होता है कि यहाँ पे अरावली आता है, गुजरात रीजन इंक्लूड हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे जो मेघालय ना, मेघालय इज पार्ट ऑफ व्हाट? पेनिनसुलर प्लेटो, बट इट इज सेपरेटेड थ्रू द माल्टा गैप. इट इज व्हाट? सेपरेटेड थ्रू द माल्टा गैप. दिस वन इज माल्टा गैप के वजह से वो सेपरेट हो गया, इसे माल्टा गैप. अदरवाइज दैट मेघालय इज अ पार्ट ऑफ योर पेनिनसुला इंडिया. सो दिस इज द पेनिनसुला इंडिया. दैट मीन्स पेनिनसुला इंडिया के बाद आता है आपका गंगेज प्लेन आ जाएगा, फिर तो आपका माउंटेन आ जाएगा, हिमालयन रीजन आ जाएगा, एंड हियर इज योर आइलैंड ग्रुप्स, हियर इज योर आइलैंड ग्रुप्स. सो दीज आर व्हाट? दैट इज द जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. दिस वन इज फर्स्ट, second Ganges, third is what? Himalaya, and both these are the fourth. So this is how the geologically we have divided, or that is India is divided geologically, naturally it is divided, right? The Himalayan region, why it forms, how it forms, right? तो हिमालय से हम डिफरेंट टॉपिक पूरा देखेंगे. सुजाता, गुड इवनिंग सुजाता, पंकज. देखो जो हिमालय है ना, उसको पूरा डिटेल में हम देखेंगे कि एक भी छोटे से टॉपिक को हम डिटेल से देखेंगे. अभी तो बस फिलहाल हम इतना देख रहे हैं कि देखो जियोलॉजिकल इंडिया कितना भाग पे डिवाइड है. दिस इज वे आर गोइंग थ्रू, राइट? द हिमालय. The Himalaya is generally everybody is aware of the fact that Himalaya is formed because of the plate tectonic effect. That is what? Collision of the Tibetan plateau, or let's say you may say Eurasian plate with the Indo-Australian plates. So because of that what? Convergent boundary. That is what? Convergent boundary. But here continental effect. The effect would be as of now the continental effect. But before 60 million years age, I would say that time there was also oceanic. Some parts of the oceanic part was there. That what? Went beneath the Tibet, and that led to the volcanic eruption. So now there is a continent and continent collision effect is going on. So basically the Himalaya is composed of what? Your sedimentary rocks. So there is so much of sedimentary rocks, there is also metamorphized rock, there is also हिमालय में ज़्यादा तो दो रॉक डोमिनेट करता है, एक तो मेटामॉर्फाइज्ड, एक तो होता है आपका सेडिमेंट, राइट? सो मेजॉरिटी रॉक्स दैट विल डिटरमाइंस और दैट इज डोमिनेट द हिमालय रीजन, दैट वुड बी योर व्हाट? क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फाइज्ड रॉक विल बी देयर. Okay, so that will be the point. Then we will come to the Gangetic Plain. Gangetic Plain is what? Alluvial deposit. सबको पता है कि ये alluvial plain है, right? यहाँ पे जितने सारे river आता है, गंगा उसका tributary, सारे ने मिल के इसको बनाया. Apart from that, I would say from the southern side से, तो Peninsular River and Himalayan River दोनों ने what? मिल के बनाया इसको, दोनों ने मिल के बनाया, and that is why this will be there.
तो ग्राउंड वाटर यहाँ पे एग्रीकल्चर के दिक्कत क्या होता है, पोल्यूशन, वो सारे तो हम मेंस के पार्ट पे देख लेना कि क्या क्या होता रहता है. Islands. When it comes to the islands, that is Andaman, Nicobar and Lakshadweep, we are having two groups of islands. These two groups of islands, that is volcanics activities, like recently volcanic eruption took place in Barren Island. So that is also very important in the September months itself. In the last week of September months, there was volcanic eruption in the Barren Island, the sole volcanic island of India in the Andaman Sea, right? In the what? Andaman Sea, just east of what I would say North Andaman, east of North Andaman will be there. Is it fine to all, everybody? Right. Now the major geological feature is that we are having craton, we are having fault mountain, we are having plateaus, we are having coastlines, other minerals resource. What would be the minerals here? Let's say this region will have minerals like what? Different minerals like coal, bauxite, limestone, mica, petroleum, different will comes, right? So tectonic setting अगर हम देखेंगे tectonic settings, so India is largely, Indian plate is moving northward and northeastward. This is very important, everybody should remember this. The Indian plate is moving 1 to 2 centimeters every year in the north and northeast direction, and there is a collision is taking place with Eurasian plate. That is, still the geologists believe that the Indian plate is subducting below some parts, is a very little part, every year is subducting below the Eurasian plate. That is why the earthquake is happening in this region. The earthquake is not happening because of these things, other things are also there. There is so much of what? Thrust, like your main boundary thrust, central boundary thrust, or the fault line, frontal boundary fault line, and Indo-Tibetan suture zone also there. So seismic activities will be there in the Himalayan region. I mean the what? Tectonic effect will be there, and that is why this Himalayan, particularly your northeast of Himalaya, which we call it Purbanchal, that Purbanchal, Uttarakhand and the central Himalayan part of Nepal, they are very susceptible for the earthquake. Why? Because they are coming and what? They are situated above the thrust line, above the fault line. That is the main reason. That is the what? Main reason ke why number of or the frequency of earthquake is more in that particular region. Everybody is comfortable, right? So these are the rock structure you can see. So these are the what? This is this color. This color is what? This color is your Precambrian rock. This is what? Precambrian metamorphized rock, the basement rock of India. And this rock is associated always in the wildest part of the earth, like your Aravalli. The Aravalli also having your Precambrian rock system. Eastern Ghat also having Precambrian rock system. Meghalaya, I said, Meghalaya is a part of what? Peninsular, and this is separated through the Malta gaps, through the Malta gaps, and that is why geologically Meghalaya is a part of what? Your peninsular part, right? So then this region is sedimentary rock. This region, Assam Valley, Gangetic Plains, Rajasthan, coastal region, these are what? Sedimentary. There would be what? Sedimentary rock. There would be sedimentary rock. Then there would be tertiary rock as well. These are, you can see the tertiary rock. The tertiary rock in the Himalayan region as well, tertiary rock. Igneous rock will be there. Here is igneous rock. Here is igneous rock. So igneous rock also there. Metamorphized rock also there, right? Now we will comes to one by one. Now we will comes to Archean rock system. Now we will comes to Archean rock system. Good evening, Pavita. So first, now we will comes to Archean rock system of India. The oldest rock of India is what? Archean rock. Archean rock, the oldest rock of India, and also the basement of India. Also the what? Basement of India. Age is what? 2.5 billion years, Precambrian age. Now this is clearly visible to all. Hope this one is visible to all. This Precambrian, this is what? Archean rock, the oldest rock of India, and this is nature is crystalline igneous rock, the basement of India. If somebody will ask you what is the basement rock of India, then you definitely you say okay, this is the Precambrian rock. This is the Archean rock. This is the Archean crystalline rock is the basement of India, on which the India is situated. On which the India is situated, right? ओडिया भी दरकार ओके सो दिस इज व्हाट ओडिया एंड इंग्लिश नो हिंदी ओके ओडिया इंग्लिश रे कहते भी ठीक अछि now the basement rock of India is what that is the Precambrian rock is the basement rock of
इंडिया ठीक अछि देन नेचर इज व्हाट क्रिस्टलाइन ताले ये कोठी कोठी देखा जो प्री कैम्ब्रियन रॉक एंड दिस इज वेरी इंपोर्टेंट टू रिमेंबर इज दैट राइट आई कैन सी के सर ओडिया रे कहंतु राइट ओडिया में चलेगा सर भाग्य ओके नाउ जदि हम देखिबा दिस प्री कैम्ब्रियन रॉक वेयर इट फाउंड ये कोठी देखा जाए ताले ये मैप को तुमको देखिया पड़िबो दिस इज व्हाट प्री कैम्ब्रियन रॉक कोठी कोठी देखा जाए देखो सिंपल ए जिंसो को मन रखिले यू कैन आल्सो रिमेंबर द मिनरल्स ऑफ इंडिया इफ somebody is aware के where the pre-Cambrian rock this color is pre-Cambrian rock this color is what pre-Cambrian rock if Odisha ध्यान से देखो एठी this is a huge pre-Cambrian rock this is a huge pre-Cambrian rock this is a huge pre-Cambrian rock and that is why this belt is called as the mineral belts of India that is why ध्यान से सुनिबे कथा बहुत इंपोर्टेंट दिस इज द मिनरल्स बेल्ट ऑफ इंडिया व्हाई दिस इज द मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया if I draw this line like this is the mineral belt of India this is the what mineral belt of India why because of this rock because of what the Precambrian rock because of the Precambrian rock because of what the Precambrian rock so this rock and this rock that is why Odisha is gifted with so much of minerals Jharkhand is gifted with so much of minerals Chhattisgarh Karnataka Andhra Pradesh Telangana that is why these states are having huge minerals because of Precambrian rock because of what Precambrian rock let the others to know about समस्त को कहि दियो ग्रुप्स रे के क्लास स्टार्ट हो जाई छी कना 7टा रे ये जेहेतु लंबा सेशन चलिबो सेतबे मते आगुरु स्टार्ट करे पड़ो घंटा आगुरु अदरवाइज सेशन को खत्म करे बहुत डिफिकल्ट हो जिवो ओके चले तो ये प्री कैम्ब्रियंस रॉक रो जदी एज हम देखबे इंडिया रो सबटू ओल्डेस्ट रॉक इज प्री कैम्ब्रियंस रॉक दिस इज क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक ग्रेनाइट ग्नेइस सिस्ट एंड स्लेट आर देयर नेचर लोकेशन जदी हम देखबे कर्नाटक तमिलनाडु ओडिशा झारखंड राजस्थान these are the states Chhattisgarh also there some parts of West Bengal also there then you will have what I mean dekhile Meghalaya plateau also there and these states are gifted with minerals now economic significance here would be so much of minerals rich in minerals like iron manganese copper bauxite gold etc granite gneiss then if somebody will ask you kahi jadi jadi pachare kahi ki Odisha re ete minerals dekha jaye to humko simple igneous sorry it's a what it's a Precambrian rock it's a what Precambrian rock it's a what Precambrian rock is there and that is why as Odisha is having one of the highest share of Precambrian rock that Archean rock this is you can see that is why this manganese iron all things eti tike dekho pink color this is what Gondwana and Gondwana rock will have what coal and that is why Andhra Pradesh also having coal this region also having coal and this is Gondwana also here so that means if Odisha is having manganese, Odisha is having iron, chromite, that is because of the rock structure. That is because of rock structure. Right? That is because of rock structure. Now comes to the Dharwar rock system. Dharwar is the second oldest rock of India. This is what? Second oldest rock of India. If I comes to the age, according to the age, it would be what? 2.5 billions to 1 billion years. So this is the and the oldest sedimentary metamorphized rock on the earth's surface one of the this is the Dharwar rock is found in the Dharwar districts of Karnataka in the Dharwar region of Karnataka तो जदि सिंपल कही तुमको क्वेश्चन पचारे कि Dharwar rock कोठी देखा जिवो in the Dharwar region of Karnataka and according to that region the rock is also named like the Dharwar rock and this rock is very precious rock for India. This is one of the oldest rock on the earth surface and the second oldest rock of India with 2.5 to 1 billion years of age. Right, 2.5 to 1 billion years of age and this rock is rich in this is the first metamorphized sediment rock of India. This is very important and one of the oldest and what one of the oldest rock right. फॉर्मेशन केबे हेची देखो प्रोटेरोजोइक एरिया दैट मींस एरा रे फॉर्मेशन हेची एथरे कोन देखा जो स्लेट देखा जो क्वाजाइट देखा जो एंड आल्सो conglomerates देखा जो राइट दीज आर आल्सो द मेटामॉर्फाइज्ड हम देखि परिबा
rich in minerals ताले तुमको सर एथरे कोन देखा जो this Dharwar rock is having so much of iron. This rock is famous for the iron. This rock is what famous for iron. ये rock कौन पाई famous iron पाई जहाँ को ये content दरकार PDF दरकार you have to join the telegram channel what OS mentor telegram channel कोठी OS mentor को join करे पड़ियो right you have to join the telegram channel OS mentor and get the PDF of rest. Now location as I said Karnataka, Bellary, Chitradurg, Shimoga, and this Bellary, Chitradurg, Shimoga is famous for iron ore, high graded hematite iron ore, and Karnataka is one of the largest reserve of iron ore in India because of the Dharwar rock system, because of Archean rock system. Because of Archean rock system. If somebody will ask you why Karnataka is having iron ore, why Karnataka is having manganese, where Karnataka is having bauxites, why these minerals are happens in the Karnataka? Because of the rock structure, because of the what rock structure, and the what rock Archean rock, what rock Dharwar rock, that Dharwar rock, and which are the districts Shimoga, Chitradurg, Bellary, all these districts are very famous for the iron ore and manganese. Is it fine everybody? समस्त बुझा पड़ुची जो मैंने ऑनलाइन रहो I can see more than 30 people are there online right बाकी मन को बुझना आउ कोठी देखा जो तुमको ओडिसा रे देखा जो एबे देखो जेते बेले तुमको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आसुची ना कि ओडिसा रे एते सारा मिनरल्स काहे मिलुची ओडिसा रे जदी हम कहबे धारवा रॉक देखा जो देन देयर वुड बी आयरन एंड मैंगनीज if there is Archean rock again there would be iron and manganese bauxite everything is there copper ये सब देखा गला if there is Gondwana rock then there would be coal that means Odisha is gifted with diverse rock system and that is why Odisha is having so much of minerals that is why Odisha is having so much of minerals right and जदि तुमको कही पत्र आउ गोटे फैक्टर्स मु एठी कहि दोची तुमको काहे की ये देखो this is what Bastar Craton this one is what Bastar Craton this one is what see this one is what just a minute this one is what this is your Bastar Craton this one is Bastar Craton this one is what this one is your what Chhotnagpur this one is Chhotnagpur cratons ba jaku ame kohuche what Ranchi plateau भी खोचे this is also a craton and two cratons this craton also comings एथरा में मयूरभंज केउझर सुंदरगढ़ आसे होची किछि एरिया craton रो पार्ट ओडिसा को मिली गेला this craton रो पार्ट ओडिसा को मिली गेला that means ओडिसा रो लोकेशन जदि हमें देखबा strategically ओडिसा is located in such a way that both Bastar craton and your Singhbhum craton dita craton ro part hi Odisha re अछि and that is why Odisha is having so much of minerals that is why Odisha is having so much of minerals ये क्वेश्चन यदि कहा को पचार दबो ना many of the students they will stumble जे काहे कि ओडिसा रे मिनरल्स मिले तो समस्ते जानि छथि काहे कि this is the region and this region this pink color rock that is your Gondwana rock and that is why coal found in the Mahanadi valley so that is the answer this should be your answer in the mains right so Dharwar rock system we have done it now what are the economic in the Dharwar rock system will have the chief minerals they're the iron manganese gold copper bauxite lead zinc these are the minerals there right so that would be there and especially that Keonjhar region of Joda and Barbils they are what rich of irons ore minerals and your hematite that what now we will comes to chromite not chromites and that chromite is largely found in what that is in Jajpur region in the Jajpur what which region Jajpur के कहबे फटाफट के कहबे देखिबा बहुत थोड़ा पढ़ाई जाजपुर रे क्रोमाइट इंडिया रो 96% of chromite that is the what chromite is a what iron ore found in Jajpur Sukinda region that is what Sukinda region चलो फिर now आपको में देख ले now we will comes to Gondwana rock होची केते 250 million years Carboniferous to Jurassic period रे देखा जाय and Gondwana rock time रे कोन हैतला over the earth surface that maximum carbon produced or the carbons started to deposit during the Gondwana time and the Gondwana time means what it is 250 million years ago we are talking about that time the carbon formation on the earth surface that happens more right basically it happens to be Carboniferous age that
exactly, if I say to be very precise, Carboniferous age, that is 350 millions, that was 350 millions. If I comes to 250 to 350 millions, that Carboniferous era or the age, during the Carboniferous age, the maximum carbon formed on the Earth surface, and that is why there would be lower Gondwana, there would be upper Gondwana, there would be middle Gondwana age are there. So Gondwana rock is largely associated with the sedimentary rock, largely associated with the sedimentary rock. As the Gondwana rock is largely associated with the sedimentary rock, that is why what? That is why they will have the iron ore. So Gondwana rock will have what? That is the Damodar, Son, Mahanadi. Here you can see Son, Damodar river, Son river, Mahanadi, Godavari, and that is why these are the rock. There is Godavari valley. That is why Andhra Pradesh is what? Singrauli, Singarini, Singarini in the Son river, Singarini, Madhya Pradesh. Mahanadi also having coal. Damodar, that is also having coal. In Jharkhand, in Jharia Raniganj, this Jharia Raniganj, they are situated on Damodar. Son river is Madhya Pradesh. That is what? That would be the Mahanadi also there. Eve coal field, then Godavari coal field. So these are that is why the coal are associated with the Gondwana rock. So 98% of the Indian coal reserve, bituminous coals, they are found with this rock. Good evening everyone. They are what? Associated. That means this Gondwana coals or the Gondwana rock, that means obviously Gondwana rock will have Gondwana coal, and the coal age, जो coal रो age आमे कहबा 250 millions ରୁ कम से को आमे कहबा Gondwana. Recent हेले सेटे तमे recent कहबा, that would be lignite हेई परे, peat हेई परे, but anthracite coal रो age केते ध्यान से सुनिबो. Anthracite coal age is 350 million years. That means 100 million plus. That would be what? Carboniferous age. That anthracite coal formed during the Carboniferous age 350 million years ago. And this coal, that Gondwana rock, is found in Damodar, Son, Mahanadi, Godavari, and that is why this region is having the coal, 98% of. Also the sources of the sandstone, clay, and some limestone. Now we will comes to Kudapa rock system. It's again a sedimentary rock. Again a what? Singrauli in Andhra Pradesh, Singarini in Madhya Pradesh, they are also having coal field. Now the Kudapa rock system. The Kudapa rock system is what? They are belong to the Proterozoic era, younger than the Dharwar rock system. This is what? Younger than the Dharwar rock system. Again, this is what? Mostly sedimentary rocks, but some rocks are metamorphized. But the age wise, if we go age wise, this is younger than the Dharwar rock system. This rock also having, just a minute, this rock also having, this is 1.6 to 1 billion years age, also having what? So voice is clear to all. I hope so voice is clear to all. Mostly sedimentary with minor volcanic activity, sandstone, shale, limestone, dolomites, and that is why these rocks also sometimes, I would say Kudapa rock system also sometimes having iron. The irons will be sometimes that will have iron, right? Because see, when I say sedimentary rock, that does not mean that would not have iron. So basically iron ore may be there, right? Maybe there, it would be maybe there, and that is why if I comes to here, that is what? That nature of the rocks, and mostly it would be sedimentary rocks having the sandstone, shale, limestone, dolomite, and that is why this Kudapa rock, there is a Kudapa district is in the Andhra Pradesh, you know everyone, Kudapa districts. Seithi Andhra Pradesh Guntur region is very famous for the cement industry because of what? Limestone, because of what? Dolomite, because of what? Sandstone. That is why the Guntur region, the Guntur, especially I would say that Guntur region, right? Guntur and Vijayawada, right? All these region, they are having so much of iron. I would say what? Cement industry. Likewise, this rock also, some kind of rock also found in Odisha, and Odisha is Sundargarh districts in the Odisha. The Sundargarh districts is having the cement industry. Why Sundargarh is having? That means the Sundargarh is having limestone, dolomite. That is why. Right. Now we will comes to distribution. In the distribution, Kudapa is in Andhra Pradesh,
So it includes the part of Tamil Nadu, Karnataka, Madhya Pradesh. So this would be Kudapa rock system. Now economic significance, it would be rich in what limestone, sandstone also there, right, and some gypsum, iron ore also. I said it carron ore यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे मिलेगा, and that is why the gypsums and iron ore also there, because sedimentary, if it is sedimentary rocks, it will have some sort, थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा, right. See, Guntur is also famous for what? This region is very so much of cement industry are there. Andhra Pradesh is the largest producer of chili in India. Significance. Next we will go to the significance. The significance that represent but Proterozoic sedimentary rocks in India, sedimentation between the older Dharwars and the younger Vindhyan regions, right. अगर यहाँ पे देखेंगे in between आ जाएगा. Insert the Kudapa, that is what Proterozoic sedimentary rocks, mainly sandstone and shales, limestone यहाँ पे दिखता है. Location Kudapa region of Andhra Pradesh, the cement and the construction minor minerals are so much found out there, right. Now we will comes to Vindhyan rock system. Next we will comes to Vindhyan rock system. See, now I will focus on content revision. Please, those who are having some genuine question, ask me. Otherwise, I have to go through the content. अगर मैं आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दूं तो फिर ये टॉपिक खत्म ही नहीं होगा. सो लेट मी प्लीज कोऑपरेट, लेट मी फिनिश दिस स्लाइड फास्ट. सारे के सारे कंटेंट को मेरे को खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश इट इन वन वीडियो और वन सिंगल शॉट पे, राइट. चलो फिर विंध्यन, एंड इसको अच्छे से पेशेंसली इसको देख लो. पेशेंसली अगर देख लोगे ना तो पूरा बहुत सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा. एंड आई होप कि आपका जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएगा. थोड़ा बहुत अगर डाउट कोई कहीं पर रह गया तो उसको हम बाकी लाइव सेशन पे कवर कर लेंगे. चले. So the Vindhyan rock system. The Vindhyan rock system again it would be belongs to the what Proterozoic era, younger than the Kudapa rock system. 1.1 to लेके what 0.6 billion years. That would be the age. यार जो age हमें देखिए, the nature of the rock would be mostly sedimentary. So that means your Kudapa rock and Vindhyan rock, they are largely sedimentary rock. But when it comes to Dharwar rock, when it comes to what I would say Archaean rock, there would be crystalline, there would be metamorphized rock, right. Let's say like we are having chondrolite rock in Odisha, that is also metamorphized, right, that is also metamorphized and part of the Archean rock system, part of Archean rock system. Now the Vindhyan rock system is age, अगर इसको देखें तो काफ़ी मतलब age कम है as compared to the other rocks, right. The nature is what mostly sedimentary, sandstone, shale and limestone, and that is why Madhya Pradesh is having so much of limestone and the Vindhyan region is having limestone. यहाँ पे और एक चीज दिखता है आपको diamond. What diamond will be there? Panha region. That Panha region of Madhya Pradesh also known for the diamond. Right, gold is in Karnataka, that is Kolar region, Andhra Pradesh regions, right. There that region is having what? Gold. But gold is associated with which rock? That is Archean rock. That is what? Archean rock. But when it comes to the diamond, it would be Vindhyan rock system. Diamond also there. राइट. इट वुड बी ऑफन फॉसिलिफेरस. फॉसिलिफेरस मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे फॉसिल मिलता है, मतलब थोड़ा बहुत अगर कहीं पे मतलब ये जो रॉक देखो, ये जो विंध्यन रॉक सिस्टम है, दैट डज नॉट मीन्स द विंध्यन रॉक सिस्टम ओनली एक्सक्लूसिवली हैविंग द सैंडस्टोन, शेल्स एंड लाइट. नहीं, कहीं पे थोड़ा बहुत कोल भी मिल जाता है, कहीं पे थोड़ा बहुत आयरन भी मिल जाता है. दैट डज नॉट मीन दिस वुड बी एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड फॉर दिस 3 टाइप्स ऑफ व्हाट मिनरल्स. ऐसे कुछ नहीं है, राइट, ऐसे बिल्कुल भी नहीं. तो ये कहाँ दिखेगा आपको? सेंट्रल इंडिया विंध्यन सिस्टम ये जो है, राइट. आपका रीवा, सागर, मतलब सागर हो गया, जबलपुर हो गया, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर हो गया, आपका बुंदेलखंड रीजन, एमपी एंड यूपी बॉर्डर, ये सारे के सारा रीजन. अगर आपका देखो, आपके मतलब जितने भी कैंडिडेट देख रहे हो ना सेशन पे, इफ यू आर गोइंग थ्रू जो ज्योग्राफी, एटलीस्ट यू शुड हैव 3 मैप इंडिया का, जो मतलब जो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. एक तो आपका खुद का जो स्टेट वाला है, जैसे कि अगर कोई ओपीएससी के लिए, आप लोग जैसे कि ओपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो उड़ीसा का जो फिजिकल मैप है ना वो, और वर्ल्ड का. बाकी वर्ल्ड का आई वुड से वर्ल्ड यू शुड हैव 2 मैप, 1 फिजिकल, एक पॉलिटिकल. तो उसमें से ना आइडिया आपको लग जाता है कि हाँ यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि विंध्यन प्लेटू, फिर आपने अगर किसी ने पूछ लिया कि सर विंध्यन प्लेटू कहाँ पे, उसको तो आप मैपिंग पे देख लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे डिस्कस उसको नहीं करेंगे हम. चलो फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, राइट. Economic significance. So this economic significance, the Vindhyan rock is having sandstone, limestone,
उसके बाद वहाँ पे इज दैट वुड बी व्हाट ग्राउंड वाटर रिजर्वायर इन द विंध्यान रीजन। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डायमंड भी मिल जाएगा, ये भी मैंने बोल दिया कि डायमंड विल हैव आल्सो डायमंड्स। देखो हिंदी पे शायद किसी को दिक्कत नहीं होगा, जितने सारे लोग देख रहे हो शायद मेरे को लगता है कि किसी को हिंदी दिक्कत नहीं होगा, राइट। तो चलो फिर सिग्निफिकेंस अगर देखें कि दिस प्रेजेंट व्हाट यंगर प्रोटोजोइक सेडिमेंट रॉक्स कुडापा रॉक सिस्टम्स इंपोर्टेंस फॉर द अंडरस्टैंडिंग जियोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ द पेनिनसुला ऑफ इंडिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, right, that is very important, as this linked the Dharwar Kudapa rock with the Gondwana rock system. With what? Gondwana rock system, that means there is what in the southern India, there would be Dharwar rock system, in Andhra Pradesh there would be Kudapa rock system, in the Gondwana rock system also there in the Mahanati, and then it comes here also, that means it's linking between the Dharwar Kudapa old to young Gondwana, right, to young Gondwana, तो पूरा पूरा लिंक करता है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें ना विंध्यन रॉक सिस्टम, दिस इज द व्हाट प्रोटोजोइक सेडिमेंट रॉक, मेनली सैंडस्टोन सेल्स, ये सारे दिखता है। चलो फिर नाउ इसको हम अरावली रॉक सिस्टम, नाउ वी विल कम्स टू द अरावली रॉक सिस्टम। Now Aravalli rock system, that is largely the rock system of Aravalli is largely what Precambrian, one of the oldest mountain ranges in the world, and this is the old fold mountain dominated by the Archean rock, ठीक अछि मिक्स्ड चलिबो किछि नै सेथरे कोन अछि, वी आर मल्टीलिंगुअल पर्सन, राइट, डोंट वरी, तो सेथरे किछि असुविधा हबो नै तम मानको, एंड यू गाइज आर आल्सो मल्टीलिंगुअल। तो देखियो जदि अरावली रे, इन अरावली यू विल हैव गेनीस, सीस्ट, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, ए सब तुमको देखा जो व्हाट दैट वुड बी डोमिनेंट, द डोमिनेंट रॉक विल बी लाइक दिस, द रॉक्स आर मेनली, that is what the rock is mainly folded and metamorphized. That means the rock that found in Aravalli is one of the old fold mountain of the world, and this is the oldest mountain of India, the relic mountain of India, the residuary mountains of India, but that is the Aravalli. When did it form? If I ask you, when did the Aravalli form? The Aravalli formed, it's about 300 million years ago, about what 300 million years ago, and before, and what before, that would be approximately I would say 300 million years and plus. Right, so that will be there. Just a minute. Right, now we will comes to the distribution, that would be Aravalli region of the Delhi Haryana region. So in the Delhi Haryana region, see from the in the Delhi Haryana region, this is also in the Delhi, this is also Aravalli, also known as what, Raisina Hill, this is also known as the Raisina Hill, where the president house, where the parliament is situated, this is also very important. See, right, so that means जो आम कहे ये जो आरावली रही, आरावली इन डेली, डेली रे आरावली को कौन कहुए, साधारणतः डेली रे जदि समस्ते जानते तो मैंने कहुए राइसिना हिल, कौन कहुए राइसिना हिल बोली कहुए डेली रे, डेली रे कौन कहूँ राइसिना हिल, जो प्रेसिडेंट हाउस रही, तो सेटा रही ओल्डेस्ट ओल्ड फोल्ड माउंटेन आम देखे, तो डेली रे देखे डेली हरियाणा, ये कौन देखे मिनरल्स कपर देखे, बहुत सारा कपर्स देखा जाए, खेतरी माइंस हरिका रही, लीड जिंक्स कंस्ट्रक्शन एंड जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस आल्सो देयर, राइट। सो हियर यू कैन सी the Vindhyan rock system, the Precambrian rock system, the cratons, they are the cratons also there, that great boundary fault also, here is a great boundary fault, this is what Mahanati Rift Valley, this would be also Rift Valley, that Narmada Rift Valley, here is also Godavari Rift Valley, there are the shear zones also there, shear zones also here is shear zone, so some shear zones are also there. हाँ, डेली रिज जहाँ को डेली रिज कहूँ, दैट इज ऑल्सो आम ताको राइसिना हिल भी कहू, डेली रिज जोटा आम उत्तराखंड को जाइए, जोटा कि वाटर डिवाइड्स ऑफ इंडिया करुचे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द राइसिना हिल। तो आम जो डेली रे दिल्ली रे ताको राइसिना हिल्स कहुए, सदर्न दिल्ली, तो खास कर जो गुरगांव रीजन रही तुम देखिए छोटी छोटी पहाड़िया इलाका थोड़ा बहुत रही। देन द रॉक सिस्टम आम देखी, सो दिस इज द व्हाट रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया में पूरा
देखिदेले तो इंडिया रे कोटी कोटी आमे जे देखबा आउरी ता व्यतीत इग्नियस रॉक मध्ये कोटी कोटी देखाउची इग्नियस रॉक रे समस्त जानछ प्लूटोनिक एंड वोल्केनिक बट एक्सट्रूसिव हेई थाए इंट्रूसिव हेई थारे जेमती तमरो डेकान ट्राप्स ई देखो इग्नियस रॉक इंडिया रे कोटी देखाचे डेकान ट्राप तो हजार थर क्वेश्चन आसी छी दिस इज व्हाट extrusive this would be volcanic extrusive basalt and that basalt रही तमर कोन ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन है सदर्न इंडिया रे ग्रेनाइट्स देखा जिवो श्रायती रॉक्स रे जदी हमें बासाल्ट देखा जिवो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट के तुमको पचर के सह्याद्री रे कोन देखा जिवो जदी हमें तुमको कहि पचरिबो जो हमर सह्याद्री बा वेस्टर्न घाट तो वेस्टर्न घाट रे कोन देखा जिवो वेस्टर्न घाट रे मध्ये हमें देखियो के मेजॉरिटी रीजन इज हैविंग व्हाट that would be your igneous rocks बामे जाको कहबा that is what Deccan Traps or extension part that means हमको देखा जो कौन it would be your what basalt तुमको देखा जो that would be basalt तुमको देखा जो देन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जदी देखबा आको ने कि यूपीएससी मध्ये बहुत तरह क्वेश्चन पचाछि कि ब्लैक सॉइल काहे की देखा जाय बिकॉज़ ब्लैक सॉइल काहे की देखा जो कि फटाफट कहबा कि ब्लैक सॉइल एथमे देखा जो बिकॉज़ वेदरिंग इरोजन ऑफ द बासाल्ट जो बासाल्ट अछि डेकान ट्राप रो सी वेदरिंग इरोजन है कि फॉर्मेशन करूछि तमरो ब्लैक सॉइल्स कोन ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन करूछि टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट बिकॉज़ ऑफ व्हाट टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट बिकॉज़ ऑफ द ब्लैक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रॉक पैरेंट रॉक so that will be there. Then we will have the sedimentary rock in the coastal region and the Gangetic plain, the valley region, right? Plain and the valley region. So that will have, that means where it will be. It will have, that means Madhya Pradesh region, sandstone, limestone. So sedimentary rock means what? Sandstone, limestone, shales, conglomerates, they will be there. There would be what? Fertile soils, cement, petroleum reserves. Let's say for example, they would be found where? In the Gangetic plain, Assam valley, Rajasthan, then river valley, coastal region, they would be there. That metamorphized rock of that is what we have already seen, that metamorphized rock of Dharwar rock, that chondrolite rock of Odisha. Then we will have what Archaean rock also. So that will we have done it. So we done it. Now we will comes to Himalaya. So the rock. So now we will comes to the Himalaya region. ये थे आमर जियोलॉजी एंड रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया तो ये जो तुम देखिबो तुमरो जोटा हम देखले जियोलॉजी एंड रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया को हमें कवर करले ना आफ्टर डूइंग दैट तो आपको हमें टिके देखिदेले तो ये थे आमर जियोलॉजी एंड रॉक सिस्टम वगैरह देखिदेले हमें राइट ये द प्लूटोनिक जोटा तुम देखिबो ग्रेनाइट गैप्रो जहार ये तो सब बेसिकली हमें पढ़ी कोथरे दैट इज द लैंडफॉर्म नाउ वी विल कम्स टू हिमालय एबे हिमालय को हमें डिटेल रे पढ़िबा देख हिमालय रो जदी मु कहबी फटाफट मु तुमको कहि दी ये होची हिमालय रेंज तुम देखि परिबो द हिमालयन रेंज जदी हम कहबा दैट इज द पैरेलल टू ईच अदर तो हिमालयन रेंज जदी देखबो खास कर ये तो व्हाट वुड बी द हिमालय तो हिमालय जदी मु कहबी सडनली द हिमालय फ्रॉम हियर so from here to I would say the Himalaya is like this the what Himalaya is like this parallel to each other this is the great that means Himalaya तो ये हिमालय जदी हम कहबा that means there would be greater Himalaya, there would be what? Greater Himalaya, middle and Shivalik. They are parallel to each other. They are what? Parallel to each other. And then bending also here, the bending also here. This bending also called as the syntaxial bend. Here would be also your bending syntaxial bend. Here would be also syntaxial bend. And this is the middle portion of the Himalaya. So these two, this side also we are having in terms of Suleiman range, in terms of Kirthar range in the Pakistan side, right? In the Pakistan side, this hair cliff or the we will say syntaxial bend runs up to what? Up to Balochistan, and the Balochistan also demanding for the separate country, right? And this side we are having Purbanchal. This side we are having that is what? Northeast Himalaya, or you will say better to say the Purbanchal. This side it is already having Suleiman range and Kirthar, and the what? Kirthar range. Also salt range also there would be also salt range, so there is also a salt range. And Pakistan also one of the largest producer of the pink salt in the world, which is what very highly costly मध्ये रही थे and ताकू मध्ये से भी बंद कर दी इंडिया को, राइट? इंडिया नहले आने के आगे प्रोसेस करके पुणी बिकी दिए बाहर को जा भी हो। तो हिमालय को हम डिटेल से टिके डिस्कस करबा। हिमालय ऊपर देखि परबो तमन एठी रहिछि कोन पामीर नॉट, दिस इज कॉल्ड एज द पामीर नॉट, जोठी कुआ जे काराकोरम ओरिजिन होइछि, हिंदुकोशरम होइछि, कुनलुन साहिछि। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द व्हाट? रूफ ऑफ द अर्थ बोली कुआ जे, दिस इज कॉल्ड एज द रूफ ऑफ द अर्थ। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द नॉट, केनोटी, नॉट अर्थात गंठी, जेंतु गुटे हम सुता को गंठी पकैतले बहुत गुडा खियो बाहरे, बहुत गुडा
क्षीय बाहर से ये हूँ पामीर नट दैट वुड बी व्हाट पामीर नट तो जदि पामीर नट कहवा देख दिस वुड बी पामीर नट दिस इज व्हाट पामीर नट दिस पामीर नट को कौन कह रूफ ऑफ द अर्थ बोली कह कुनलुन सा काराकोरम्स हिंदुकुश डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स एठू बाहरी एंड दैट इज सेथिपे ताकू कह द रीजन और द रीजन वेयर द माउंटेन ओरिजिन सेठू सब माउंटेन ओरिजिन है ओके चलो फिर हम देखो हिमालय तो हिमालय जी फॉर्मेशन हम कहवा दिस इज टर्शियरी एज फॉर्मेशन है हिमालय फॉर्मेशन 50 मिलियन इयर्स तो टर्शियरी एज रे हम कहबे हिमालय फॉर्मेशन है मु कमेंट देखुची समस्त डोंट वरी तो हिमालय रे जदि फॉर्मेशन देखा ये क्षेत्र फॉर्मेशन है टर्शियरी एज रे फॉर्मेशन है सेनोजोइक एरा रे फॉर्मेशन है दिस इज वेरी इंपोर्टेंट बहुत थर पचार को एरा रे हिमालय फॉर्मेशन है सेनोजोइक एरा रे फॉर्मेशन है कहीं मु कहि इंडियन प्लेट कोलिजन विथ यूरेशियन प्लेट एंड इट्स ए world highest fold mountain not old fold this is the young Alps fold mountain this is what Himalaya is a young fold mountain so Himalaya is a what young fold mountain why we are saying young because of the formation age this is what this is your young fold mountain this is your young fold mountain that what Himalaya is the young fold mountains and the highest mountains in the world and the also highest mountain in the world formed during the Cenozoic era 50 millions to नहीं कि जदि हम कहबा 50 to 15 millions केते 50 रु नहीं कि 15 50 रु नहीं कि 15 millions हम कहबा 50 to 15 millions एज भितरे फॉर्मेशन है तीनटा तक ग्रेटर हिमालय मिडिल हिमालय एंड सिवालिक्स जियोलॉजिकली दिस इज एक्टिव दैट इज व्हाई वेरी इंपोर्टेंट एंड द कोलिजन ऑफ बोथ द प्लेट्स what geologically active when I say geologically active means still it is moving where north and northeastward and that is why the rivers of the peninsula of India also shifting their course and there was this research and a study was also published in the newspaper I hope many of have already gone through that paper that the river banks also shifting their course due to the movement of our plate. So that is why earthquake, landslides, all these high altitudinal disaster are also other disaster that is associated with the geological active boundary that is also there and that is why Himalaya is susceptible. This is very fragile to the landslide, to the earthquake, right? Now extension. So Himalaya जदि हमें देखिबा so from here to here 2400 किलोमीटर समझते चाहे से ग्रेटर हिमालय चाहे से मिडिल हिमालय चाहे से शिवालिक both are having what 2400 kilometers of the length and parallel to each other from Indus to Namcha Barwa. That means I would say from here if I say from here would be your Namcha Barwa, the highest peak is what Namcha Barwa, here would be your Namcha Barwa, the highest peak and here would be Nanga Parbat, and this is the westernmost highest peak Nanga Parbat and the Namcha Barwa here would be your what Namcha Barwa the easternmost highest peak of now from here to here it is what 2400 km right that is there chale so that will be there the westerns then the Himalaya is divided into three parts ध्यान से देखिए the Himalaya is divided into three parts I means जेतरा हम हिमालय को साधारणतः हम तीन भाग रे भाग करथौ काहे कि हिमालय को तीन भाग रे भाग करथौ जेतरा हम हिमालय एमती ड्रा करू छ ना if I draw the Himalayas like this parallel Himalaya now this is what eastern Himalaya central Himalaya and western ताले ए रहबो तमरो कोन काली रिवर this would be Kali this would be Tista let's say मो एठी लिखिबी तमरो Tista तो एठी मु Tista लिखिबी that means ध्यान से सुनिबो from Kali to नहीं कि Indus एपटे किए रहबो तमरो Indus this would be western Himalaya and from Kali अर्थात from Uttarakhand to नहीं कि हमें सिक्किम जाई धरिबा this would be central Himalaya and from here to here मतलब ब्रह्मपुत्र जोठी तमरो दिहांग जोठी आसुची तमरो दिहांग बा जाको में सियाक कहूचे this would be eastern Himalaya that means from Siak to Tista eastern Himalaya from Tista to Kali that would be central Himalaya from here to here the western Himalaya I means so in India we are having eastern Himalaya part we are having western Himalaya but the central Himalaya is largely concentrated in Nepal in what
नेपाल राइट बुझा पड़ुछि समस्त को ए हेजिबो तमरा ना फिजिकल डिवीजन मु जदी कहबी तो हिमालय को जदी हम देखिया फिजिकली ट्रांस हिमालय जो अछि हिमालय अछि ट्रांस हिमालय के आसो काराकोरम लादाख एंड जास्कर काराकोरम रो हाईएस्ट पीक समस्त जानछ दैट इज के टू गॉड स्टिल लादाख रो हाईएस्ट पीक के रहिछि दैट मीन समस्त जानछ माउंट व्हाट दैट इज माउंट कैलाश के रहिछि माउंट कैलाश जास्कर रेंज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट दैट मीन्स जास्कर एंड हम कहबा यू आर हैविंग व्हाट Pirpanjal ता भीतर रहिछि तमर काश्मीर वैली दैट इज द काश्मीर वैली बिटवीन जास्कर एंड पिरपांचल मीन्स व्हाट मिडिल हिमालय कोठी अछि इन जम्मू एंड कश्मीर मिडिल हिमालय को कहै छै पिरपांचल रेंज रहिछि तो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट मध्ये रहिछि एबे तमे जानछो पिन वैली नेशनल पार्क जोटा को दैट इज द व्हाट 13th मैप हम कहबा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्वेशन रहि गेला यूनेस्को साइट रासि गेला राइट ता पूर्व 12टा हमर टोटल अछि केतेटा बायोस्फीयर 18टा बायोस्फीयर रिजर्व 18टा बायोस्फीयर रिजर्व पूर्व 12टा थिला हमर मैप प्रोग्राम रे मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम रे लेटेस्ट ऐड हिछि कि तमरो कोल्ड डेजर्ट ऐड हे गेला हां कि नहीं लेटेस्ट तमरो पिन वैली नेशनल पार्क कोल्ड डेजर्ट इस ऐड हे गेला नाउ ग्रेटर हिमालय नहीं तो हमें देखले तो हिमालय दी भाग भाग होछि ग्रेटर हिमालय जति हमें देखिबा 6000 तो जो ग्रेटर हिमालय रहिछि जाको हम कहै छै हिमाद्री जाको हम कहै छै हिमाद्री that is we called as the himadri जो हिमाद्री रो जति हम देखबा एवरेज इज 6000 मीटर स्नो क्लैड ग्लेशियल लेक्स तुमको देखा जबो एंड द नंबर ऑफ ग्लेशियल लेक्स इन हिमालय इज इंक्रीजिंग दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न what the number of lakes in Himalaya is increasing that is a cause of concern what because that increasing lakes will cause the cloud frost glacial outburst that will be what flash flood that would be glacial outburst that would be flash flood that will cause that is the number of glacier and number of lake is increasing in Himalaya means this is the impact of climate change this is the what impact of climate change correct समस्त को बुझा पड़ुछि right the famous hill एथरा अछि जो that means तमन लेजर हिमालय ग्रेटर हिमालय गला लेजर अर्थात मिडिल जाको को मिडिल हिमालय जाको को हिमाचल मिडिल हिमालय ए लेजर अर्थात मिडिल बा जाको हिमाचल कहै नाउ मिडिल हिमालय को जम्मू एंड कश्मीर को पिरपांचल उत्तराखंड कह जाए तमरो मसूरी रेंज कह जाए उत्तराखंड कौन कह जाए मसूरी रेंज कह जाए एंड तमरो हिमाचल रे ताकू धौलाधर रेंज कह जाए उत्तराखंड ताकू नाट्टिबाबी कह जाए आउ कौन कह जाए नाट्टिबाबी ताकू कह जाए तो डिफरेंट ना रे जना जाए जेमति तमे एठी देखि पारिबो एठी दार्जिलिंग कहूचे हमें कोठी दार्जिलिंग कहूचे हमर तमरो कोठी इन वेस्ट बेंगल में ताको दार्जिलिंग कहूचे मसूरी आसी जबो शिमला आसी जबो जे त फेमस हिल स्टेशन सब तमरो एठी आसी होची कोठी मिडिल हिमालय रे राइट धौलाधर कथा कहछि महाभारत कथि पिरपांचल कथा कहछि पिरपांचल जेएन के धौलाधर इन कोठी तमरो रहबो हिमाचल प्रदेश रहबो महाभारत कोठी कह जबो नेपाल रे महाभारत रेंज कोठी रहबो नेपाल रे तो आकोठी के तमे प्रीलिम्स में एटा इंपोर्टेंट रहि छै फटाफट मन रखि दियो अगेन मु कहूची ध्यान से सुनबो एटा प्रीलिम्स में इंपोर्टेंट रहि छै दिस इज व्हाट वेस्ट बंगाल this is what Uttarakhand this one is what Nepal that means हमें कहा को कहूचे this would be in what Shimla HP this would be HP this would be HP this would be J&K this would be J&K what J&K so एटा तुमको मैच करे पे दे पारे what प्लस आउ गोटे रहला मु खली यूके रे आउ गोटे हम जते यूके रे देखा जबो अर्थात उत्तराखंड रे आउ गोटे कह जो नाट्टिबा राइट आको कौन कहै नाट्टिबा तो उत्तराखंड में ताको कह कुमाऊं रेंज भी कहती आउ के कहती कुमाऊं रेंज आउ उत्तराखंड कौन कहती दैट इज कुमाऊं रेंज आउ कौन कहै कुमाऊं रेंज मध्य आसी जाए राइट दैट इज व्हाई दिस इज इंपोर्टेंट दैट इज व्हाई दिस इज मैच राइट यू हैव टू मैच इट right done it then Shivalik so Shivalik is also called as this is the middle Himalaya now Shivalik is called as the outer Himalaya also called as the Shivalik or outer Himalaya और जको में छोटो बोली कहै छै composed of the unconsolidated sediments that is the Bhavar and Tarai तार फुटिल रे कोन देखा जो on the foothills of Shivalik there would be first Bhavar then Tarai I guess वो Bhavar zone is very important because that is unconsolidated comprised of big boulder pebbles and cobbles but the stream disappears कोन होवे stream disappear ही जाए किंतु stream सब emerge कोठी करे तराई रे and Tarai is a what that is a what swampy area Tarai is a what swampy area Bhavar is what it's a dry region किंतु Bhavar गोटे गोटे बड़ बड़ गछ देखा जिवो but Tarai is what evergreen type of what is what semi moist deciduous and evergreen type of forest तुमको Tarai रे कोन देखा जिवो evergreen type of forest and Tarai region is having so much of national park and the biosphere reserve of India right
then we will comes to पूर्वांचल पटकाइबम्स नागा मिजो मणिखास ये सब तो देखिछ मैपिंग रे सब कराइछि बिल्कुल मैपिंग देखि देथो मैपिंग रे बिल्कुल कराइछि now this is see in the when it comes to if I do the mapping जदि हमें हिमालयन रीजन कथा कहबी एटा समस्त देखिछ ना एटा मते कहया को पड़िबो जदि तमे एटा समस्त पढिछ ना पढि ना मते कहया पड़िबो एवरीवन आई होप के मतलब समस्त देखि देथो फाइन so this one let's say from Sikkims it will be like this it would be what like this so here would be your Garo Khasi Jaintia Garo this would be Garo this would be Khasi this would be Jaintia here is Karbi Anglom here is Karbi Anglom here would be your what Patkaibum Naga Mani Mijo what Mijo would be there these are there then here would be Dafla Miri Avor Mismi here would be Dafla here would be Miri here would be what Dafla Miri Avor that would be what Avor will be there and Mismi so these are there then Patkaibum then it would be Patkaibum then Naga Hill Mani Hill Mijo Him Gara Khasi Jantia Karbi Anglom so these are the what these are the mountains of northeast this would be the mountain of northeast ये सब देखि दैछ समस्ते मन रहि जो then हमें rivers कथा देखिबा in the rivers and valley of Himalaya region the rivers देखवा there would be Ganga river there would be Brahmaputra there would be Indus there would be Kashmir valley Kangra valley there would be Kathmandu valley also there antecedent in nature majority of the rivers जेमति Satluj river Indus river Brahmaputra river बारंबार कहिछि they are the antecedent river of India बहुत थोर कहिछि म this is not the first time that I am going through and I am saying they are the antecedent river they are antecedent means what insequent they are what insequent they are not sequent they are insequent but they are the main streams now climate what would be the climate here Himalaya is acting as a barrier it's acting as a barrier otherwise the cold wave from the Central Asia from the what Siberia region could have invaded India and the Indian climate would have a different because of the Himalaya like a barrier like a divar like a structure huge structure that influence the climate of India and that is why we are having a distinct climatic region of the world is it clear to all everyone बुझा पड़छ समस्तको now here would be Gangotri glacier Yamunotri Siachen glacier the largest and the longest glacier also there rich biodiversity मध्ये तुमको हिमालय रे देखाजबो and Himalaya रे water source हिमालय को कोन कहा जे the water tank of the world कोन कहा जे the water tank of Asia बोली ताको कहा जे the water tank why because number of rivers origins and they are feeding billions of peoples they depends for the drinking water and the irrigations on the Himalaya and that is why Himalaya is called as what the water tank of Asia the water tank of Asia what would be the minerals the water will be there Kailasnath is there Amarnath is there Kedarnath is there Badrinath is there Yamunotri Gangotri number of religious places are there so that would be religion significance of Himalaya Kailas temple also there Kailas that means what Mansarva not temple strategic barriers against the invasions of difference that means let's say Indo-China Indo-Nepal Indo-Bhutans otherwise just imagine had there not been the Himalaya the invasions the history of India also shaped by Himalaya otherwise many invasion may have taken from that area if Himalaya were not there so Himalaya not only shaping the climate of India it is also shaping the that is what geography of India it is shaping the culture of India as well because from here we are having the Indian culture and from there they are having the Chinese culture from west there is Islam culture so India's culture also being defined redefined or the defined by the Himalaya but by the Himalaya so that is why Himalaya is having so much of significance Himalaya is a unique a strategic barrier against the invasion otherwise let's say in the ancient times in the medieval history and the ancient history you might have gone through the history everybody I believe so that all those invasion that take place through the northwest frontier part Khyber Pass why that was susceptible otherwise if there were no Himalaya that means majority of the invasion could have taken place from the north as well clear to all challenges there would be earthquake there would be landslides then why there is so much of landslides in Himalaya because of tectonically active region because of what there is number of faults
if I comes to the here, that is the number of fault lines in the Himalayan region. In the Himalayan region, see, Himalayan region to complete in a single lecture, it is very difficult. But if I say this is Greater Himalaya, let's say this would be Tibet. For say this would be your Tibet. So here is Indo-Tibetan suture zone, Indo-Tibetan suture zone. Here is your Greater Himalaya, Middle Himalaya, Shivalik, and here would be your Ganges. Here would be your Ganges, and here is also that main central thrust. Then it would be your central thrust. It would be central thrust. It would be main central thrust. This would be what? Himalayan frontal thrust. This would be what? Himalayan frontal thrust. This would be Himalayan frontal thrust would be there. Here would be middle thrust will be there. Right, in this region there would be middle thrust, that Himalayan middle thrust would be there, or the central thrust, and this is exactly the central, middle and frontal. So there is three types of fault. The tinta fault अछि आपको Himalayan frontal fault कहाजे. This is that means हमको middle fault और ये होची central, ये होची तुम्हारा middle fault. This is what? Middle fault. This is frontal fault line, and this would be central. This would be your central fault. This would be central fault. That is why these areas are very susceptible for the earthquake. They are very susceptible for the earthquake. Challenges is earthquake. There would be habitat loss, deforestation, glaciations, that is glacial retreat also there. The border dispute, that is what? Militations of Himalaya. These things are the main perspective रे ताकु तो मैंने देखी दबा. Right. चले फिर हम देखवा next time देखवा. Then rock of Himalaya. Himalaya को पका rock देखा जाए. तो हिमालय जदि हम देखा डोमिनेंट रॉक जदि हम देखा दैट इज द कोलिजन जो फॉर्मेशन है तो एथरे कोन देखा जो दैट इज डिपोजिटेड एतो चांस समझते टेथिस सूरो फॉर्मेशन है तो हिमालय इज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेथिस सूरो फॉर्मेशन है जो टेथिस सी अर्लियर दैट इज वेयर द गैंगटिक प्लेन द प्रेजेंट डे गैंगटिक प्लेन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट टेथिस सी फ्रॉम द असम टू नेक अप टू मेडिटेरियन सी दैट इज द व्हाट टेथिस सी एंड द टेथिस सी वाज हैविंग द डिपोजिशन ऑफ द व्हाट सेडिमेंटरी रॉक दैट सेडिमेंटरी रॉक फॉर्म्ड इनटू द फॉर्म ऑफ compressed and folded into the form of Himalaya, and that is why conglomerates are there in the Shivalik zones, and the limestone sandstones that would be Shivalics and the lesser Himalayas, but there would also metamorphized rocks हमको देखा जो that greater Himalayas. In the greater Himalaya there would be metamorphized rocks. So here you can see the metamorphized rocks, that pressure and heat पहले heat है जो थोड़ा schist issue मध्य तुमको देखा जाए metamorphized rock also there. तो Himalaya does not have only single rock. Himalaya different जोटा हमें कहले conglomerates that means sedimentary ये सब देखा जाए वो तुमको कोठी लेजर हिमालय एंड फ्रंटल्स रे मेटामॉर्फाइज तुमको देखा जो मध्य इग्नियस रॉक मध्य देखा जाए जोटा हमर कहवा जोठी किछि किछि रीजन रे हिमालय रीजन रे इंट्रूसिव वोल्केनिक एरप्शन मध्य हेतला तादर हमको कहवा जो हायर हिमालय मोस्टली हायर हिमालय जेते रहिछि सेठी इंट्रूसिव देखा जबो हे जो एबे करेक्ट डन हिमालय में देखि देले ना कम्स टू द इंपोर्टेंट पासेस जदि हम देखा जोजिला पासेस कोठी छै श्रीनगर सन लेह को कनेक्ट करू छी जोजिला पास बनिहाल पास सब मोस्ट इंपोर्टेंट पास होची जमू कसे श्रीनगर को कनेक्ट करिवो ना जाको बनिहाल टनल बलिया में कहू छे देन जोजिला पास रहिछि बुर्जिला पास रहिछि कश्मीर एंड गिलगिट को रहिछि देन तमरो फल्टुला ला मीन्स पास दैट इज आल्सो द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ श्रीनगर टू लेह हाईवे देन खारडुंगला आल्सो नुब्रा वैली तुमको देखिबा दैट मीन्स अगेंस्ट हाईएस्ट मोटरेबल्स रोड्स तुमको चांगला आल्सो देयर इन चांगला लेह रीजन बाराला चला हिमाचल प्रदेश रीजन Lalangla in also in Aksai region, then Kwara also there, Sipkila also there. So these are the passes also there. Apart from that, you will have Rotong Pass, Baralacha Pass, and Kunjum Pass. There would be Spiti Valley in Himachal Pradesh. In Uttarakhand, Niti. कहाजे लिपु को कहाजे नीति मानने की चालो, अर्थात लिपुला नीतिला मानाला. लिपु को कौन कहाजे नीति मानने की चालो. सेति में कहाजे नीतिला लिपुला मानाला. आउ कौन रहिला तमरो मांसला. So that would be there. तो ये उत्तराखंड है गला एंड सिपकिला तुम मैंने जानचो सिपकिला इज वेरी इंपोर्टेंट पास होची जोटा तुमरा सिपकिला पास रहिची सिपकिला होची हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड बॉर्डर रे तो एटी ते हिमाचल प्रदेश रहिबो एटा हिमाचल प्रदेश एंड टाइबेट को कनेक्ट करचो थ्रू हिज व्हाट व्हिच रिवर इज कमिंग थ्रू व्हिच योर Satluj river is coming. What Satluj river is coming? Then when it comes to the Sikkim region, Nathulan, Chelepla, they are connecting with what? That is the Sikkims with I am कहिबा Tibets. That would be
टाइबिट पार्ट बुझा पड़ो समस्त को एवरीवन सबको समझ में आ रहा है राइट टाइबिट पार्ट एंड देयर इज अ व्हाट Kalimpong in West Bengal, that is Jelepla is connect Kalimpong in West Bengal with what Lhasa in Tibet. Jelepla, Kalimpong is a hilly regions also there in the West Bengal region. That would be there. So this is the Nathupla and Jelepla, right? Then Arunachal Pradesh. Then we will comes to Arunachal Pradesh. Everybody comfortable? समस्त बुझा पड़े इन अरुणाचल प्रदेश बोमडिला सीला पास एंड दीपू पास दिस इज वेरी इंपोर्टेंट पास यूपीएससी ओपीएससी र फेवरेट पास पचारे से तो दीपू पास कोठी देखा जो चाइना एंड म्यांमार ये होची तीनटा ट्राई जंक्शन दीपू पास कोठी देखा जो इंडिया चाइना एंड म्यांमार जगह रे देखो दीपू पास तो सीला पास कोठी देखा जो अरुणाचल प्रदेश एंड तावांग समस्त देखि परिबो एंड तावांग देखा जो सेमती हमें कहबा दैट इज कामिंग जोटा बोमडिला रहची कामिंग एंड तावांग को कनेक्ट करूची राइट ये तुमको देखा जीवो देन जदि आम देखा तो ये आसवा देन जे&के रे जोजिला पास खारडुंगला पास ये सब देखी हिमाचल प्रदेश देखी चलो फिर रिवर्स को आसवा नाउ वी विल कम्स टू द रिवर्स तो ये थला हिमालयन रीजन तो पूरा में हिमालय को हमें कवर कले हिमालय ही जो है एतिकी फाइन एवरीवन दैट वुड बी फाइन टू ऑल हिमालय दैट दिस वाज द व्हाट हिमालय तो शॉर्ट ट्रेम देखो जे इन शॉर्ट वी आर गोइंग थ्रू द हिमालय बिकॉज सी इफ आई स्टार्ट व्हाट going through the Himalaya that will take time so much of times right because this is matlab within 2 to 3 hours we have to finish this session and that is why I can't take so much of times to finish it okay for the prelims point of view I think this would be enough for you right so for next one now we will start the rivers of India now we will go through the rivers of India in the rivers of India first that is the general features now see in the rivers of India first we will comes to the snow clad Himalayan that is the perennial rivers so rivers those origin जो सब river Himalayan origin होची से माने साधारणतः perennial river सही था ये कथा समझते तमन जान जान they are having most of them are the antecedent rivers they got deep jaws and built that is uplifts of the Himalaya right now they are the youth साधारणतः देखो जो माने कि हमें कहे Himalaya region to those rivers origin from the Himalayas they would be youth they would be active they will have more vertical erosion they will have rapid they will have catarapid they will have waterfall they will have V-shaped valley they will have jaw they will have canyon as well sometimes they will have canyons and they will have maximum V-shaped valley what plus potholes will be there plus potholes will be they would be the characteristics of the rivers of Himalayas having they are active they are active the river is generally divided into 3 parts youth that is young youth and mature so this the river when it passes through the Himalayan region that means it is a youth when it comes to the what I would say before the plain it would be mature and when it comes to the plain it would be old phase that would be old phase right so that would be there now the Indus river first river we will go through the Indus river so Indus river if you go through the Indus river side I have not given the map the map is not given here so simply I will go through this one and those who require the map you can have the map beside you now the Indus river see the Indus river say apart from that we will go through in the detail इसके बाद ना उसका detail भी हम जाएंगे the Indus river origin from the Mansarovar nearby region that would be what Indus river lake close to that region and that is Chemayangtu glacier also there alright also there so that would be near the Kailash mountain पाखर जदि origin हो enters India जदि हम कहवा through the Ladakh range and flow through the J&K then it will what Ladakh region then Jammu and Kashmir there it will enter to the Pakistan पुजिबो the left bank जदि हम देखिदवा थारा it will have left bank and right bank both are tributaries in the left bank it will have that Jaskar will be there Suru or Siak will be there Gilgit will be there on the right side there would be what just a minute तो ना यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा राइट लेफ्ट बैंक चेनाब झेलम रवि बीस दे आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस दैट व्हाट मेजर दीज आर द व्हाट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तो इसको ना थोड़ा करेक्ट कर लेना ये थोड़ा करेक्ट होगा क्योंकि दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी दिस चेनाब झेलम रवि बीस दे आर द लेफ्ट बैंक बट आपका जो सियोक होगा गिलगिट होगा दे आर द राइट बैंक बट जास्कर इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी Jaskar is what left bank tributary then it would be Kabul there would be Gilgit there would be Siok there would these rivers are the but इसको थोड़ा ना करेक्ट करना पड़ेगा इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना राइट दिस वन इज नॉट करेक्ट राइट इसमें इधर उधर हो गया उसका थोड़ा देख लेना
सो नियर द नंगा पर्वत दैट विल एंटर इनटू द उत्तर प्रदेश। इसको थोड़ा चेक कर लेना, राइट। चेक मतलब जैसे बोल दिया मैंने, ये लेफ्ट बैंक, सारे के सारे लेफ्ट बैंक है, चेनाब, झेलम, रवि, बीज, सतलुज, जिसको बोलते हैं पंचनाथ। ये जो पंचनाथ पूरा का पूरा लेफ्ट बैंक है, इसमें जास्कर भी आपका लेफ्ट बैंक हो जाएगा। बाकी जो हो गया सियाक, गिलगिट, काबुल्स, ये सारे के सारे राइट बैंक हो जाएगा, दे वुड बी राइट बैंक। इसको मैंने पहले भी पढ़ाया, राइट। चलो फिर then we will, and there is a what deep jaw, the river is forming a deep jaw through the Nanga Parvat or close to the Nanga Parvat, then the river will turn towards the south and it will enters what Pakistan Pak region, that would what Pak region. Then the Ganga system, the Gangotri glacier, that is Bhagirathi, right, and Alkananda A plus B at D equal to G, ये प्रथम में पढ़ी थे, that means we have covered it earlier, that Alkananda plus Bhagirathi at the Prayag, then it becomes the G मतलब Ganga, that means A plus B at D equal to G, that would be, and Alkananda also having what, there would be Bhagirathi, Alkananda will have also 5 prayags, that would be Vishnu prayags, there would be Kanda prayags, there would be Rudra prayags, what, there would be your and there would be your Nanda prayags, these prayags are also there, so Vishnu prayags, Nanda prayags, then it would be Rudra prayags, right, these are the prayags are there, isn't it? The number of prayags are also there. So there are 5 prayags, and the 5 prayags, if I go through the 5 prayags, the fast it will be like that. Let's say the Alkananda is coming from the Satpant glacier, from the what, Satpant glacier. Now as it coming from like this, there would be Bandarpunch, and here would be Satpant glacier, this would be what, Satpant glacier, then Dhauliganga, Ganga, then that would be Vishnu Prayag, here it would be Vishnu prayags, then it would be, then Mandakini, Rudra prayags, it would be Rudra prayags, then it would be Nandakini, it would be what, Nandakini, Nanda prayags, it would be what, Nanda prayags, and what, it would be Karna prayags, but there would be also Karna prayags. So these things are also there, isn't it? These things will also there. Then Brahmaputra. So this is the world's largest delta forms with Brahmaputra, then ends, then comes to the Brahmaputra river. So Chema-Ingtu glaciers, that is again close to the Mansarovar, Tibet, what, close to the abode of Lord Shiva, where this is in Ladakh region ରୁ ସେଠି origin होची, enters to India, India को enter कला through the jaw, जोटा हमकला नामचबरा जोटे को आज सियाक बा दियांग रिवर आउट के पूर्व कोती तादर एंट्री कला, then it will join with दियांग and लोहित, तापर ही जो ब्रह्मपुत्र जोटे जो आसाम रे कोठी, आसाम रो कोठी कोइतली मु साडिया पाखरे, आसाम रो साडिया, from the Sadia to Dhubri, that would be known as the Brahmaputra, and then it would be Golpara, Golpara पाखरे एंट्री करबा कोठी ये बांग्लादेश को एंट्री करबा, then joins with the गंगा, गंगा जाको जमुना बोली कुहाजे, then it would be पद्मा, पद्मा है कि ये जाय की कोठी पड़िबो बे बंगाल, forms a river island, largest river island, the largest river island मध्ये इथरे देखाचे, and the smallest as well. Then तीस्ता, आरो important Himalayan river होची तमरा तीस्ता देखबा, सुबनश्री देखिबा, मानस होची, धनश्री होची, तोरसा होची, ये सब हमें परे देखिबा, irrigation आगे हमें देखिबा, right, चलो फिर हमें देखिबा. Then असवा major peaks, Himalaya important peaks जदि हमें देखिबा, important peaks of Himalaya, Himalaya have the world highest peaks सब एठी देखा जो most of them in Nepal, in India, greater Himalaya range रही. For example जदि हमें देखिबा नंगा पर्वत रही तमरा पाकिस्तान Pak occupied region, the Killer Mountain बोली ताको कुहाचे, why, that is called as the Killer Mountain, that is called as what, Killer Mountain बोली कुहाचे. Then Saltros, that what, Kangri, Karakoram range, that is also there, Siachen glacier. Then K2 Godolphin, that is also there, Karakoram and Pak region एठी देखा जो. Then Himachal Pradesh रे जति हमें देखिबा, that is what, Pugril and Shila peaks मध्ये देखा जो near the Spiti valley. Uttarakhand रे जति देखिबा नंदा देवी, कामेत, Trishul, and that what, Chokhamba, these are also near the Badrinath. So these are the important peaks are there in Uttarakhand. Now in Nepal's Mount Everest, Kanchenjunga also close to the border of Sikkim and Nepal. This is border region, right? It would be around 8,500, so that would be there. Then we comes to what, that is Hoste or Loste, you may say, whatever. Then Makala also there, Dholagiri is also there, Annapurna also there, Mansalu also there. So these are the also other peaks in the different regions रे हमें जति देखिबा ये रही. Then Sikkim को जति एसो Kanchenjunga and Kabru देखा जो तुमको ये रहे important peaks. When we comes to the Arunachal Pradesh, there would be what,
obviously नामचा पर्वत रही एंड गोरी चेन जाको पिक कहूँ गोरी चेन हाईएस्ट पिक इन अरुणाचल प्रदेश 6488 मीटर्स ता व्यतीत आम कहवा कंगोट पिक रही एंड नामचा पर्वत रही। तो ये रहिबो तमरो इंपोर्टेंट पिक्स जोटा आम देखीदे दीज आर द इंपोर्टेंट पिक्स। देन हिमालय आम देखा मिनरल्स ऑफ हिमालय। नाउ वी विल कम टू मिनरल्स ऑफ हिमालय। हिमालय कौन कौन मिनरल्स देखा जाए तो हिमालय बेसिकली इफ यू कम्स टू द हिमालय देयर द मिनरल्स विल बी देयर लाइमस्टोन अबाउंडेंस इन कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम से लाइमस्टोन बहुत देखा जाए सीमेंट इंडस्ट्री पे इंपोर्टेंट। जिप्सम जामन कैसे हिमाचल प्रदेश रे बहुत देखा जाए प्लास्टर वगैरह पाई। देन कोल तुमको लो ग्रेडेड देखा जाए आसाम और अरुणाचल प्रदेश टर्शियरी कोल देखा जाए। ऑल्सो जेएंड के तुमको देखा जाए कौन देयर इज व्हाट एंथ्रासाइट कोल मध्य देखा जाए। पेट्रोलियम नेचुरल गैस आसाम एंड हिमाचल प्रदेश ए सब देखा जाए। कॉपर तुमको ये दरकार नहीं हमको ये सब देखा जाए बट स्मॉल पोर्शन तुमको सिक्किम नेपाल देखा जाए। लीड एंड जिंक हम देखो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम रे देखा जाए। प्रेशियस स्टोन्स तुमको कश्मीर जदि हम पेनिनसुला रे देखा जाए एंड गोल्ड डस्ट मध्य देखा जाए साउथ में। देन हिमालय जदि हम देखा ये डिफरेंट डिफरेंट जगह रे डिवाइड होची ये तुमरो मिनरल्स हम देखि देला। नाउ सिग्निफिकेंस रही एनर्जी मिनरल्स रही सीमेंट इंडस्ट्री ये सब पई रही। लिमिटेशंस कोन देख ये रहिबो हमर हिमालय रो दैट मींस आमे को जोटा मु कहितली एमबीटी बीबीटी ए जो देख ये होची तमरो मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये होची तमरो मिडिल बाउंड्री थ्रस्ट ये होची तमरो फ्रंटल हिमालय थ्रस्ट जोटा मु कहतली दे द एक्सिस रही। आप मु ऑलरेडी डिस्कस करिछि होप समस्त को बुझा पड़ी जो एथरे एथरे किछि कहार डाउट नहीं एवरीवन क्लियर समस्त कमेंट कर दे क्लियर जीवा गो। नाउ वी विल कम टू रिलीजियस प्लेसेस इन हिमालय। रिलीजियस प्लेसेस इन हिमालय जति हम देखो अमरनाथ रही तुम काश्मीर वैष्णव देवी जैन के रही तुम शक्तिपीठ रही एंड हेमिस मोनास्ट्री रही लद्दाख में लार्जेस्ट मोनास्ट्री ऑफ लद्दाख हम कहबा। देन तिंगसी दैट इज थिक सी जहाँ कहि परबो तमे एंड एलची रही ये सब तक मोनास्ट्री बुद्धिस्ट सेंटर्स रही। देन आम जो हिमाचल प्रदेश रे तमने समस्ते जानचो दैट इज व्हाट ज्वालामुखी टेम्पल्स रही जोटा कि वन ऑफ द 51 शक्तिपीठस आम कहबा। देन चामुंडा देवी रही है सेमती तुम नैना देवी रही ये सब डिफरेंट रही। कुल्लू मनाली टेम्पल्स रही टाबोर मोनास्ट्री रही की मोनास्ट्री रही दीज आर द इंपोर्टेंट मोनास्ट्रीज रही। सेमती उत्तराखंड रे जदि हम देखा देवभूमि कह द लैंड ऑफ गॉड्स बोली कह जाए है ये आम कहबा। तो गॉड्स ओन लैंड होची तुम कि केरला गॉड्स ओन लैंड कहा जाए केरला एंड देवभूमि होची कि उत्तराखंड देवभूमि होची कि उत्तराखंड। सो दिस इज द टू डिफरेंस हम कहि परिबा। जहाँ दरकार मु कहली तमन को ये कौन आर जो कंटेंट तमन को कोठी मिलबो स्टडी आईक्यू टेलीग्राम चैनल और मोर जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल रही ओएस मेंटर पर्सनल टेलीग्राम चैनल जोटा मोर ओएस मेंटर रही सेठी जॉइन करो तमने कंटेंट सारे के सारे कंटेंट तमन को मिल जिवो राइट। कंटेंट जदि तमन को दरकार ओएस मेंटर माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल जॉइन कर दबो। देन हमको उत्तराखंड रे जो तुम बद्रीनाथ रही केदारनाथ गंगोत्री दीज आर द व्हाट 4 धाम प्रोजेक्ट जो कि बहुत इंपोर्टेंट केस स्टडीज मतलब मेन्स रे आसी एंड द प्रीलिम्स रे जदि तुमको पचारिबो यमुनोत्री जोटा तुम यमुनोत्री ग्लेशियर जोटा आसी गंगोत्री गंगा आसी भागीरथी केदारनाथ वन ऑफ द 12 जदि हमको ज्योतिर्लिंग ज्योति रही ज्योतिर्लिंग समर रही से बद्रीनाथ मध्य आसुचे तो ये आम देखा। देन तुम रही बट पंच केदार रही जोटा आम केदारनाथ तुंगनाथ रुद्रनाथ राइट मध्य माश्वर एंड दैट इज व्हाट कापेश्वर ये रही पंच केदार रही एंड पंच प्रयाग्स रही जोटा आम डिस्कस कर ऑलरेडी विष्णु प्रयाग्स जोटे धौली गंगा आसूची नंद प्रयाग्स दैट इज व्हाट नंद प्रयाग्स रही तुम नंद रिवर सहित कर्ण प्रयाग रही आम कौन सूर्य दैट मीन्स आम कर्ण क्या रही तुम क्या दि जाए कर्ण मतलब आम कहे व्हाट जो आम कहे कर्ण को दि जाए कौन ऑफर करा जाए कौन ऑफर करा जाए रुद्र प्रयाग्स रही मंदाकिनी आम कहवा। देन देव प्रयाग्स तुम जो भागीरथी एंड अलकानंद मिशु देव प्रयाग्स रुद्र प्रयाग्स जो मंदाकिनी आसिक मिसी कर्ण प्रयाग जो तुम आसी किए मिसी किए कह फटाफट कह कर्ण प्रयाग कौटी देखा फटाफट कह। देन नेपाल से आम कह नेपाल पशुपति टेम्पल्स रही काठमांडू से कहुए पशुपति तिरुपति कौन से माओइस्ट कॉरिडोर सेमती मुक्तिनाथ देखा दैट मीन्स व्हाट मुक्तिनाथ टेम्पल देखा एंड स्वयंभूनाथ टेम्पल्स देखा ये भी तुम बुद्धिस्ट टेम्पल्स रही राइट। सिक्किम ये सब रही अरुणाचल प्रदेश रही तो ये थला रिलीजियस सिग्निफिकेंस देखला। देन आसपा हमें गंगा रिवर देखा नेक्स्ट आसपा हमें गंगा रिवर तो ये पूरा कंप्लीट हिमालय रिवर सिस्टम कंप्लीट ना में रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया देखा ये थिला एतिकी जहाँ हमें देखले
अप टू हिमालय पूराटा मु हिमालय देखिली पूरा देखाइछु आमे लगभग बहुत सारा आमे पेजेस देखिले केवल हिमालय ऊपर हिमालय को डिफरेंट एंगल रे आमे पढ़ी देले ठीक अछि कमेंट कर दियो तमन को केमते लागुछि राइट everyone you can put the comment there in the comment section. I am also watching the comment. Now we will comes to the Ganga river system, the one of the world's largest river system, and this is the national river of India, the national river of India, and this is also called as the Ganga Mata, Ganga Maya. What? Ganga Maya. This is also called as what? Ganga Maya. The river origin from the Gangotri glacier, Uttarakhand, right? From which glacier? That is the Gangotri glaciers. The Bhagirathi, in the name of Bhagirathi, then it will join the Alkananda through the Devprayag in what? Uttarakhand, and from the Devprayag, that means A plus B and D equal to G, then it will be Ganga. Then in the Prayags, Allahabad, it will meet with the Yamuna. It will meet with Yamuna. And nobody is commenting today. अरे सबको समझ में आ रहा है? Everyone, Sasmita, Little, Muduli, Nayak, Preeti, everybody is there, right? Clear to all? सबको समझ में आ रहा है? Everybody, right? Now, so origins हमने देख लिया. Total length, what would be the total length? 2525 kilometer length. The total length will be there. That would be the total length. Now, if it comes to the length, it's not matter. The matter is that 26% of the India's land area across 11 states. Across what? 11 states. And this is the significance. 11 states, can you imagine? Bengal, Jharkhand, Bihar, UP, Madhya Pradesh, Rajasthan, Delhi, Haryana, Uttarakhand, Himachal Pradesh. Let's see so much. These are the number of state that covers is highest. The upper course is the Himalayan river, Bhagirathi river, and the Alakar river. The middle course is called as what? That would be the Uttar Pradesh plains, and the lower course is Subarnarekha delta and Sundarban delta. Sorry, Sundarban delta. That would be the middle course. Major tributaries, the right bank tributaries are what? Yamuna, Son, Punpun. There is also what? Right bank tributary. If I comes to the other right bank tributaries, there would be what? Falgu river will be there. There would be also Damodar river. There would be also Ajay river. These rivers are also there. But left bank, Ramganga, Gomti, Ghagar, Gandak, Kosi, Mahananda. Mahananda also there. Buri Gandak also there. Right. They are the number of tributaries are also there. Fast Ramganga, Gomti, Ghagar, Gandak, Buri Gandak, Kosi, then Mahananda. That would be the rivers are there. Then there would be rivers. Then significance. Most fertile and densely populated region in the world. The province, agriculture, drinking water, these are there. The Ganga plain, one of the most fertile agricultural region of the world, and this is also called as the granary of India, the sacred river of Hindu religions and the rituals. This river is not only sacred for the Hindu religion, but also for the Jain, for the Buddhism, and for the other religions as well. The national river declared in 2008 and having the national aquatic animals, that is the Gangetic dolphins, also called as Sisu. Also called as what? Sisu. Also called as Sisu. The human importance. The population support by this 400 million people, the largest river basins of population globally. Uses of water for the irrigation, drinking water, hydropower, navigation, and the fishery. The central sites are the cultural sites are the Haridwar, Varanasi, Prayagraj, Patna, Kolkata lies on this bank. So this is how the significance of the religious significance of the Mahakumbh festival that was also arranged. And because of that Mahakumbh festivals, though that billions of rupees were earned by the what UP governments and the different sections of the society of the peoples as a whole, but the devastation is been caused to the rivers, that is also unpredicted and unprecedented as well. Now comes to the rivers tributaries. How? These are the tributaries. Here would be your Ramganga, Gomti, Ghagra, Gandak. Where is Gandak? So that would be Ramganga, Gomti, Ghagra, Gandak, Buri Gandak will be there. Koshi, Mahananda. Mahananda is not here, right? Mahananda iti nahi. You have to draw the Mahananda. So Mahananda, that means here would be, you can have the loop. The dhyan se dekho. It would be Ramganga. Is coming from Uttarakhand. So Ramganga. Then Gomti, then it would be Ghagra. This Ghagra also called as the Kali river, joti hame koche Kali river, right? Ghagra. Then as for Gandak, then as for Buri Gandak, here would be, it would be Buri Gandak, then Koshi, then Mahananda, then it would be Mahananda, then here would be. Then in the other side, it would be Yamuna,
and Chambal is the tributary of Yamuna. Banas is the tributary. Parvati, Kali Sindh, Betwa, Ken, Son, right? So that would be Falgu river. There would be also Falgu river, Damodar river, all other tributaries. They are the right bank tributary. They are the what? Right bank tributary. This is the rapid revision for the Ganga series. This is the what? Rapid revision of Indian geography. Now the Indus river, then we will comes to the Indus rivers. But apart from that, in the Ganga river there would be what recently, that is the Tehri dam also there in the Bhagirathi, and here is the largest barrage of India, one of the largest barrage, that is what Farakka barrage in the West Bengal. And here from in the here you can see the from the Farakka barrage the river is turning what sharply towards the what south. So here is river is turning south, and this would be Hooghly or the Bhagirathi, and the other parts is moving towards the what Bangladesh, the Indus river system. Now we will come to the Indus river system. The Indus river system origin from the what Ladakh region of Tibet, the Lake Mansarovar region, and the Karakoram range. So in between the Karakoram range and the Ladakh range, the river pass through the region of the mountain region of Ladakh and Jammu and Kashmir to enter Pakistan. The total length is 3,180 km, one of the longest river in the world and the longest than the Ganga. The basin is 1.12 million square kilometers, spans over India, China and Pakistan. The upper course is Ladakh, the middle course is Punjab plain, and the lower course is the Sindh region. In the what Sindh region? Karachi, Arabian Sea, that will fall to the Arabian Sea. The tributaries, the right bank tributaries. So the right bank tributaries are Siok, that again this is what incorrect is written here. So this is what not correct. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्ट कर लेना, राइट? जो भी देख रहे हो ना इसको थोड़ा बहुत करेक्ट कर लेना, इसको ध्यान नहीं दिया मैंने. So these are what left bank tributaries. They are what? There would be left bank tributary. There would be what? Left bank tributary. But mainly अगर हम right bank के देखें तो that would be Siok, Nubra, then Kabul. They would be the right bank tributary. So not this Panchanath. So they are what exactly? So यहाँ पे थोड़ा ना इधर उधर हो गया, इसका चेंज कर लेना, राइट? तो इसका थोड़ा गलत हो गया क्योंकि झेलम, चेनाब, बीस, रवि, सतलुज, दे आर द व्हाट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी. ये राइट बैंक नहीं है. अगेन आई रिपीट, दे आर नॉट लेफ्ट बैंक. उसमें क्या आ जाएगा आपका? हाँ, जास्कर, आपका जो जास्कर है ना वो भी आपका लेफ्ट बैंक हो जाएगा, राइट? व्हेन इट कम्स टू द राइट बैंक इट वुड बी सियोक, नुब्रा, गिलगिट, काबुल, दे वुड बी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी. देन इंपोर्टेंट वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, वो तो सबको पता है, एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर्स. एंड दिस टाइम द रिवर वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी दैट इज इन थंडरबस्ट में गया. सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, that is what suspension of Indus Water Treaty by India, that 1960s, it was the 1960s when the Indus Water Treaty was signed in September, 17th of September or the 19th of September. So I am not rightly recalling that day, particular date. Probably it would be September month, September 17 or 19, when that times our the late Prime Ministers Jawaharlal Nehru and General Ayub Khan of Pakistan, they signed it with the mediation of World Bank that times, right? The three rivers, three eastern flowing rivers like your Satluj, Ravi and Beas was given to India, and the western flowing rivers like your Chenab and I would say your what Chenab, Jhelum, they were given to Indus, given to Pakistan. So hope everybody knows this. ये सबको पता है, right? तो इस बार ये न्यूज़ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो. दिस इज नुब्रा, सियोक, गिलगिट, राइट? काबुल, दे आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी. द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आर सतलुज, रवि, चेनाब, झेलम. सो दिस आर देयर. सो झेलम रो गोटे छोटो ट्रिब्यूटरी होची नीलम, जोठी होची कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट होची. कोन होची कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट इज बीन ऑब्जेक्टेड बाय पाकिस्तान, बट वी विल गो थ्रू. So here is the Satluj river, you can see. So these are the lakes from where is the Satluj river, the antecedents river, Indus antecedents river, these are the river. The Satluj will meet with what in the Punjab, in the region of Punjab, the Satluj will meet with Beas. The Beas and Ravi Beas, they are coming from the where? That is the Rohtang Pass. Kotu origin hochi Rohtang Pass. Chenab river kotu hochi Baralachala. Jhelum kotu hochi Very Nagru origin hochi. Kotu hochi Very Nagru origin hochi. Right? So these are the sources, जो टर्म के लिए sources.
जो तुम बीच रिवर रही ये जो आम रही हरिके वेटलैंड पंजाब जो हरिके वेटलैंड रही है हूँ लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ये तुम रही तो यू आसी तुम इंदिरा गांधी केनाल है पूरा ये रीजन को आसो दैट वुड बी इंदिरा गांधी केनाल देन सतलुज सहित मीट कर किए दैट वुड बी रवि देन रवि सहित मीट कर किए चेनाब सो चेनाब सहित किए मीट कर झेलम and Ravi is moving like this and the Chenab will comes and then finally it will meets with what the Satluj will meets with Indus in the Punjab province Panchnath. Then we will comes to Brahmaputra. Is it fine? Clear to all? Right, now we will comes to Brahmaputra. So this is pura river system को मु cover करबे कौन करी पूरा river system. The origin of Brahmaputra origins that is a Yanlong Sampo in the what from the Tibet region, that is what Bukharchu glacier, that is what Bukharchu glaciers we called is what that Bukharchu regions or the Tibet, simple you may say from the Mansarbar, close to the Mansarbar lakes, that Chemayangtu glacier, that is called as what Chemayangtu. That Bukharchu is what here Indus is coming from the Bukharchu, but Chemayangdung is for the Brahmaputra, right? Correct it. Chemayangdu for the Brahmaputra and Bukharchu for the Indus. Now this would be there. Now Indus is origin in the name of Yalang Sangpu he आसीबो देन तापर एंटर करिवो तमरो अपर कोर्स जोटा में यानलंग सांपो ही के आसी इंडिया रे से एंटर करिवो अरुणाचल प्रदेश रे सियाक एंड दिहांग रिवर नारे से एंटर करिवो देन लोहित एंड आसुत मीट कला पर हिजो ब्रह्मपुत्र इन द नेम ब्रह्मपुत्र हे की आसाम वैली रे जिवो देन एठी जेतरो आसीबो छे कोटे बांग्लादेश से जेतरो एंटर करिवो इन द नेम ऑफ जमुना, इन द नेम ऑफ व्हाट जमुना. राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जदि हम देखिबा सो इट विल हैव आल्सो लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जदि हम देखिबा the left bank and the right bank tributary जदि हम देखिबा तो right bank tributary होची सुबनश्री दिहांग लोहित कामेंग ये सब ठीक अछि जहाँ पे अछि मु तुम मन को देखिए दोछि मैप देखिए दोछि here you can see the left bank and right bank tributary, right, the left bank and right bank tributary. So this is what the Yalang Sangpu is coming and enter करूची इंडिया रे in the name of Siak, in the name of what Siak. तो ये आसुची तमरो सियाक रिवर है कि एंट्री करूची प्रीलिम्स में रिवर सिस्टम बहुत इंपोर्टेंट. तो ये होची तमरो एंटर करूची हियर इट इज एंटरिंग and here is what Dibang river, this is Lohit river, they are coming and this is the Sadia region, this is what Sadia region, this is the Sadia of Assam plain, this is the boundary of Assam and Arunachal Pradesh जदि हमें देखिबा ये तमे देखि परबो बाउंड्री लाइन आसाम रो रहिछि पूराटा ये पूरा आसाम एमती देखुछ दिस इज द आसाम वैली हमें जाको कहूचे आसाम वैली रहिछि. तो ये जो आसाम रे ब्रह्मपुत्र एपट आसुछि तमरे देखि परबो कामेंग रिवर इज कमिंग, right, so number here would be a Tista is coming, तो एठी हमें देखिबा Tista is coming, there would be जलधाका, right, तोरसा मानस एठी हमको मानस रिवर देखा जिवो जलधाका देखा जिवो, right, तोरसा देखा जिवो एंड जलधाका तोरसा आ गोटे रहिछि छोटिया रिवरटा तमर रहिछि. सो दैट मीन्स हम जे देखाइबा here would be Tista जलधाका तोरसा मानस Kameng river also there, then you will have what Subansri river also there. So these are the small here. Here would be Dibang, this is for Dibang, Dihang, Lohit, then Tamarasi what Dihang, so Dhansri, Kopli, this would be Kopli, this would be Dhansri. तो ये सारा रिवर्स तो मैंने देखिबो जदी एबे आसीबा में एपड़ को आसीबा देखे देबी मु तुमको ना. आई विल कम्स टू हियर तेबे देखा तुम लेफ्ट बैंक ये सब भूलभाल लेफ्ट बैंक राइट बैंक सब भूलभाल ही जाई छी. तो पता नहीं यार ये मैंने लेफ्ट एंड राइट को शायद सो जदि आई विल से इंटरचेंज आपको कर देबो, यू हैव टू इंटरचेंज इट, राइट. लेफ्ट बैंक रे देखो एटा ये जो दिया छै ना दिस आर द राइट बैंक, एटा माने दे आर व्हाट राइट बैंक, दे आर व्हाट राइट बैंक, दे आर द लेफ्ट बैंक. ये सब चेंज ही जाई छै पता नहीं, राइट. So these are the what हाँ जदि तमे कहबो कि सपोज लेट्स से द रिवर इज कमिंग लाइक दिस तो आमे जदि एई पोटू देखिबा ना एमिति जदि देखिबा देन दिस इज द लेफ्ट साइड दिस इज द राइट साइड बट रिवर त एमिति आसुचे ना द रिवर इज कमिंग लाइक दिस सो वी हैव टू वाच फ्रॉम हियर and that is why as the river is coming like this and like this so this side would be what the right side. We can't say कि we will watch from this angle, so this is wrong na, right. River is coming like this so that is why this would be right side, this is left side and ये गलत हुआ है तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट लिखा है इसको राइट कर दो एंड यहाँ पे जो इसको लेफ्ट कर दो बस हो जाएगा, राइट. चले फिर
This is the largest river of India by discharge. आप देखें by discharge, this is one of the largest river of India, but not the largest river. The largest river of India is Ganga. Brahmaputra Valley highly fertile and suitable for the agriculture, and especially Assam plain. Especially what? Assam plain. Especially what? Assam plain. Now I can see the comments. Comment was not showing. सिद्धार्थ राउत कौची को बुक फॉलो करिया दरकार गुड इवनिंग सनु प्रसाद कौची the comment was not showing मते comment देखा जो नथला बे now I can see the comment मु से सेतल देखुतलु comment कहीं के आसुनी yes हाय बे मु देखि परसी तमन को comment सिद्धार्थ राउत चलो सर देखियो हमें बुक को देख नेक्स्ट हियर नाउ वी विल कम्स टू द अदर रिवर हमें अबे पेनिनसुलर रिवर देखवा सो ये थला गंगा सिस्टम्स इंडस सिस्टम हम देखिथिले गंगा सिस्टम देखिथिले एंड ब्रह्मपुत्र देखिथिले नाउ वी विल कम्स टू अदर सिस्टम नाउ महानदी सिस्टम महानदी रिवर वी हैव सो मेनी टाइम्स इन द ओडिशा ज्योग्राफी व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द ओडिशा ज्योग्राफी इन दैट ओडिशा ज्योग्राफी वीडियो आई हैव गॉन थ्रू दिस वंस सो आई थिंक राइट so in the what in the Odisha sections Odisha that Odisha part of geography I have discussed this one and for this what you have to do is that simple you have to join the telegram channel मोर जो telegram channel रही जोटा वेस मेंटर रही join the वेस मेंटर and get the pdf तुम को बाकी information सारा तुमको कोठी मिली जीवो वेस मेंटर कोठी मिली जीवो वेस मेंटर so there you will get right चलो फिर Now, Mahanadi river system जदि देखो origin from the Sia Hills, Chhattisgarh, Amarkantak region, no, that is Dandakaranya region. That is from the Dandakaranya region. So many times I have said that Mahanadi is the largest and the longest river of India. Sorry, Odisha is origin from the Siva mountain, Farsia village, Dhamtari districts, south of Raipur, Dandakaranya region of Chhattisgarh, with approximately 900 kilometers. Out of that, approximately 500 kilometers is within Odisha, that to be precise 495 kilometers, and the rest of the part is lies in Chhattisgarh. Is it fine? समस्त बुझा पड़ुची सेथरे आमे देखिबा आर लेंथ आमे त देखि देइथिले समस्त आमे कहबा छत्तीसगढ़ ओडिशा देखि जाउची ईस्ट वार्ड फ्लोइंग अछि महानदी रिफ्ट वैली रे जाउची चिलिका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जदि देखबा हासदेव इफ दैट मींस इफ रहिची मांट रहिची हासदेव शिवनाथ फास्ट रही किए एठी लिखा है शिवनाथ लिखा है तो से लिखो शिवनाथ हासदेव इफ मांड एपटे ओंग जोंग तेल्स ए सब तुम रही तुम ए सब ऑलरेडी आम पढ़ी आको अब मुझे देखिए महानदी रिवर्स देखिदेव हासदेव शिवनाथ एठी लिखा है शिवनाथ हासदेव मांड इफ दे आर द व्हाट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ओंग जोंग तेल्स दे आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी फॉल्स टू द बे ऑफ बंगाल्स द डिटेल्स ऑफ महानदी आई हैव डिस्क्राइब्ड इन द ओडिशा ज्योग्राफी सेक्शंस the details of right now we will come to Godavari river. So Godavari, the second longest river of India and the largest of peninsular of India, origin from the Pararambh plateau, Nasik, Maharashtra, Mahabaleshwar plateau. Right, not Mahabaleshwar, Nasik, Maharashtra. The Nasik is famous for the onion production, the one of the largest in India and world. Length यदि हम देखो लगभग 1500 किलोमीटर लेंथ, second longest river of India after Ganga. 3,12,812 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर कर महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिशा रीजन ताहले जदि तुमको पचार गोदावरी केतेटा स्टेट्स देखि जाए महाराष्ट्र तेलंगाना छत्तीसगढ़ ओडिशा मध्य प्रदेश किछि पार्ट मध्य प्रदेश मध्य आसे कोर्स कोन ईस्ट वार्ड जाउची समस्त को बुझा पड़ची एवरीबॉडी कंफर्टेबल राइट यदि आम देखा आर राजमुंड्री पाखे प्लेन को टच कर राजमुंड्री पाखे बैरेज मत रही राजमुंड्री बैरेज वेस्ट आम कह जाकू गोदावरी डिस्ट्रिक्ट्स बोली कहूँ लेफ्ट बैंक जदि आम देखा पूर्णा प्राणहिता इंद्रावती आउरी बाकी अच्छी एथरे लिखा है ना कौन कौन रही फटाफट आम देखिए गोदावरी रिवर को एक मिनट सॉरी जस्ट अ मिनट इन बिटवीन जहाँ जहाँ पचार कथा पचार अगेन मुझे कहीदे कि जो तुमको जहाँ पीडीएफ दरकार यू कैन जॉइन टू द टेलीग्राम चैनल जोड़ा वेस मेंटर रही फॉर द
Brahmaputra systems, we have done it. Just a minute. I was where? Godavari, right? So we were in Godavari. हाँ, तो गोदावरी रिवर कथा मु कहूली गोदावरी रिवर जदि आम कह ऑरिजिन कौट हो तुम ये किए गोदावरी तो हाँ तो गोदावरी जदि आम देखा गोदावरी बेसिन जोटा आम कहे ये गोदावरी रिवर देखिपर गोदावरी रिवर तुमको कही त्रायंबक प्लेटू ऑरिजिन होची कोठी त्रायंबक प्लेटू महाराष्ट्र ऑरिजिन होची ओडिशा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश आम देखा तेलंगाना महाराष्ट्र ये सब देखी से जाऊँगी तार लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जदि देखो ये मुझे देखी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किए तो दैट इज द पेनगंगा वेनगंगा वार्धा प्राणहिता ध्यान से सुनो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट पेनगंगा वेनगंगा वार्धा मिसिला परे हब प्राणहिता तो दैट मीन्स आम कहवा ये हूँ गोदावरी गोदावरी एमती जाऊँगी हियर इज व्हाट हम देखिपर श्रीराम सागर डैम्स रही आउपरे दैट इज धारणा गोटे छोट रिवर्स रही देन हियर वुड बी द व्हाट कुडम प्रोजेक्ट रही कुडम प्रोजेक्ट गोटे रही देन पेनगंगा वार्धा आसूची महाराष्ट्र ये देखिए बेतुल प्लेटू आसूची वार्धा एपटे आसूची पेनगंगा एपटे आसूची वेनगंगा तीन जन ये मिसबे मिसिला जो पार्ट को कह प्राणहिता प्राणहिता होगी से आसो गोदावरी मिसब एंड हियर यू कैन सी गोदावरी हाउ द गोदावरी इज मेंडरिंग देन गोदावरी एंटर कर कौटी ये देखिपर तुम एपटे आमर ओडिशार आसो इंद्रावती साबरी एंड सिलेरू साबरी सिलेरू दीटा आसबनी साबरी आसो कहीं कहल साबरी एंड सिलेरू मिसीज कौटी ओडिशा आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ जो बॉर्डर रही दीटा मिसीज जहाँ को कहे कोलाफ एंड माचकुंड कहे दीटा मिसीज से दीटा न कहीं गोटे कहे इंद्रावती एंड साबरी आसिक मिटिब देन राजमुंड्री पाखे रही पोलाभरम प्रोजेक्ट तौक टी पोलाभरम प्रोजेक्ट रही देन पोलाभरम प्रोजेक्ट पर तुमने आसो डेल्टा एंड बे ऑफ बेंगल पढ़ देन इट विल फॉल टू बे ऑफ बेंगल करेक्ट एवरीवन बुझा पड़ो समस्त को देन जी आम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहवा निजाम सागर रही तुम देख निजाम सागर मांजरा तो मांजरा रिवर इज वेरी इंपोर्टेंट रिवर सब लंगेस्ट ट्रिब्यूटरी जोटा कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कह दैट वुड बी मांजरा दैट वुड बी व्हाट मांजरा ये मांजरा बहुत इंपोर्टेंट तार राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड मानेर एंड व्हाट मानेर टू राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मांजरा एंड मानेर देन कावेरी देन वी विल कम्स टू कावेरी देन थवीरा महाकुटकुंडी चलो फिर आज हूँ रैपिड रिवीजन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी फॉर द ओपीएससी प्रीलिम्स कंप्लीट पूरा में देखो कावेरी रिवर को आसवा इन द कावेरी रिवर व्हाट ऑरिजिन जदि आम देखा द कावेरी रिवर ऑरिजिन फ्रॉम द ताल कावेरी तो कौटू ताल कावेरी कौटी कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक ऑरिजिन हम वेर ताल कावेरी एंड दैट टू बी द वेस्टर्न घाट कावेरी रिवर अच्छा कौन आम कृष्णा छाड़देले कि कृष्णा तो आम देखने वी हैव नॉट डन कृष्णा राइट Krishna is not done. Okay, let it. So we will go through. Okay, we will have Krishna. Kaveri. So Kaveri is what origins that would Tal Kaveri, Kodagu district, Karnataka in the Western Ghat. Total length 760 km. That is drainage basin Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry. That would be the Kaveri. So Kaveri will have what Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. The south eastward movement karibo ye Puducherry and that is what Nagapattinam's Bay of Bengal जाकि पड़िबो लेफ्ट बैंक जदि हम देखिए हेमावती सिमसा अर्कावती that would be right bank Kavni Bhavni and Amravati they are the rivers so here you can have the picture of Kaveri and they are the tributaries of Kaveri also there this is very important river most disputed river of India is the Kaveri river and the important dams जदि हम देखा this is the what most fertile river and the civilization जदि southern civilization Dravidian civilization हम कहे Kaveri river bank रे हाइड्रो पावर जदि हम देखा मेट्रो डैम रही कृष्णाराज सागर जोटा कर्नाटक रही जोटा आम तुम मैंने जान माहेश्वर अच्छी कृष्णाराज सागर मेट्रो डैम रही आंध्र प्रदेश आकर रही व्यतीत ये रिवर उपरे जदि आम देखा दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साउथ ऑफ गंगा बोली आपको कहुए राइट आपको दक्षिण गंगा रोचे तुम आपको भी कहती दक्षिण गंगा भी कहती ये तार ट्रिब्यूटरी हेमावती सिमसा अर्कावती एंड व्हाट सुवर्णवती कहुए राइट बैंक जदि कावनी भावनी नयाल्स एंड अमरावती बोली कहुए सो दिस डज दैट हाँ सो ये आम देखी तो कावेरी उपर सब इंपोर्टेंट कथा हूँ जो मेकाडाटू प्रोजेक्ट नाउ इन द रिसेंट टाइम मेकाडाटू प्रोजेक्ट ऑफ द कर्नाटका इज बिल्डिंग ए मेकाडाटू प्रोजेक्ट ऑफ द कावेरी दैट इज द कावेरी इज अ प्री हिस्ट्रिक आई वुड से फ्रॉम द कॉलोनियल टाइम्स द डिस्प्यूट ऑफ द कावेरी इज गोइंग ऑन टिल नाउ द रिवर ऑफ केरला
So I have forgot to add the what Krishna river, but I will add the Krishna river. I will add the what Krishna river. Let me add the Krishna river here, right? I will add the Krishna river here. Though I have forgot to add the Krishna river, I will add the Krishna river here. चलो फिर देखते हैं Krishna river. So we will go through the Krishna river. If I draw the India map like this, the Krishna river, which is origin from the Mahabaleshwar plateau, and here is the Godavari river, they are meeting like this. So this side is Krishna river, the origin from the Mahabaleshwar plateau, from the what? Mahabaleshwar plateau, Maharashtra. What? Mahabaleshwar plateau. So this is origin of the Krishna river, origin from the Mahabaleshwar to Maharashtra, then it will pass from the Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh and falls to the Bay of Bengal. This is the third longest rivers of India after Ganga and Godavari, because this would be your Godavari. So this will also having important tributaries like what? Tunga and Bhadra. There would be what? Tungabhadra. There would be Malprabha, Ghatprabha, Tunga, Bhadra. So these are also there. So this would be what? Now in this side you will have Malprabha, Ghatprabha, Tunga, Bhadra and Tungabhadra also there. So this side I would say in the right side, this would be left side, this would be right side, this would be Malprabha, Ghatprabha, Tunga, Bhadra and Tungabhadra. This side would be Koyna, there would be what? Koyna also there, there would be Koyna, and Musi river, there was what? Musi river, Musi and Muneru, Musi and Muneru. So two important rivers left bank is what? Musi and Muneru. Koyna is this side, Koyna is this side, right? So Koyna would be this side. This river is the most important dam in this river is here, that is what? Is called as Srisalam Dam. Srisalam Dam. What? Srisalam Dams, and also Krishna Sagar also there. Also Krishna Sagar also there. Srisalam Dam in Andhra Pradesh. Srisalam Dam in Andhra Pradesh. I means the right bank tributaries, there would be Koyna, there would be Ghatprabha, there would be Malprabha, there would be Tunga, there would be Bhadra, Muni, Musheru, and a small also there in the left bank. In the left bank there would be Muni, there would be Musi, Musi river, Hyderabad. Hyderabad is situated on the bank of Musi river, old Hyderabad, and Muneru. And Muneru, they are the left bank tributary, right? They would be the left bank tributary of what? That is Krishna, Krishna river. Then we will have the river of Kerala. Done everyone? Now comes to the river of अरे समस्त को बुझा पड़ुची now the rivers of Kerala is हम देखा in the Kerala almost 44 major rivers छाड़ा केरला रे छोटे छोटे दीटा rivers रही. The most important rivers of Kerala is the Periyar river, the longest river, 244 km length, and the hydroelectricity, that is the Idukki Dam. The most important dam is Idukki Dam is there. Then there would be the second important river is the Pamba river, that is what? That Sabarimala temple, Pamba river. This is very important river, Pamba river, Sabarimala temples. Many times that Padmanabheshwar temples also remains in the news because of the wealthiest temples of India. Right, Sabarimala temple समझते जानते untouchability को लेके केस है इतना सुप्रीम कोर्ट रे Sabarimala केस को लेके where the females were allowed, right? सेटा में देखी थे Chalia river also there, industrial use Chalia river also there, fast flowing rivers मध्ये देखा जो तो ये देखी परिवार में Kerala जो some of the Kerala rivers. So here would be the Pamba river, and this is the Vembanad lake. This is what Vembanad, Ostamodi, all these lakes are there. And the Periyar river, this Periyar lake, the Periyar river origin from the Periyar lake and it moves like this. So Periyar is the longest river of Kerala. So that would be there. बाकी छोटे-छोटे rivers बहुत सारे छोटे-छोटे rivers है उसको नहीं चाहिए हमें, right? That would be there. So mostly another river is Bhavni river, mostly in the Kerala, that will be also there, right everyone? So देखो ये precisely we are going through short and precise. This is not like it would be like 10 hours or the 20 hours of session. Complete Indian geography will be done in depth. No, in depth it would be takes more than 10 hours and the 15 hours like that, but it is not possible, right? चलो फिर
The facts: the Kerala has as many as small backwaters. They will have Bhembanad, they will have, that is what, Ostamudi lakes, they will have also Ostamudi. So these are the backwaters. So if any state is having the highest backwaters, of, they would be the Kerala. Next, we will comes to the Narmada rivers, origin from the Amarkantak Narmada Kund, Madhya Pradesh. Right from the where? From the Maikala range. The length is lagvag 1312 kilometer length, westward flowing river, the only river that not married mythologically. Vindhya and Satpura range bhitar jauchu west flowing river, this is forming what? Estuary, not delta. The right bank tributaries are the Hirna, Kulab and Sakar. Left bank tributaries are Tawa, that is Hirans, and that is what? Purna. There the Tawa river is a tributary of like this. So Tawa re ame jodi kehba, Tawa river is also Hira, also there, the Hiran also there, Kolar also there, Kolar. Significance: the major west flowing rivers, hydroelectricity, Sardar Sarovar dams achi, and Statue of Unity. And what? Statue of Unity. But this river is very important. This Narmada river is flowing through the marble and the hard rock. That is why river re bahut sara waterfall dekha jaye, and the famous waterfall is Dhuandhar waterfall, Bedhaghat, Jabalpur. What? Bedhaghat, Jabalpur. Bedhaghat, Jabalpur पाखरे ये waterfall बहुत ही famous waterfall, धुआंधार waterfalls बहुत थोड़ा क्वेश्चन पचारिछि. ठीक अछि. कहीं की ये रिवर्स estuary formation करे, this is river is flowing to Rift Valley, that is why carrying lowest sediment. Right, now Tapi river again flowing through the Rift Valley. Origin from the Betul region of the Maharashtra, sorry, Madhya Pradesh जति हामी कहबा west flowing rivers Madhya Pradesh origin हुए महाराष्ट्र एंड गुजरात है कि जाए आरबीएन से को जाए सूरत सिटी तमरे पाखरे रहिछि. एंड आमे जे देखा इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होछि पूर्णा, गिरना, अनेर एंड पिंजर एंड बोरी. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात है कि तापी जाउछि. तापी के ऊपर को प्रोजेक्ट अछि कि कहबे उकाई प्रोजेक्ट. कोन अछि? उकाई प्रोजेक्ट. एवरीवन कंफर्टेबल. नाउ कम्स टू यमुना रिवर. आमे चलछे then mountain को आसीबी, then mountains of India आसी पूरा detail, then mineral, soil, crops, everything, island, everything I will discuss. Is it fine? There, anybody is having questions, you can ask me. Chalo fir. Now we will comes to Yamuna river. Yamuna is coming from the Bandarpunj peaks of what? Uttarakhand, that is the Uttarkasi districts of Uttarakhand, and which is called as what? The Garhwal region. That is coming from the Garhwal region, Uttarakhand, and the length is 1376, the longest tributary of Ganga. The basin is so much: Uttarakhand, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Rajasthan, Delhi, all these regions are coming all the way. Right, Sanu Prasad? Yes, you can ask me. Now, ये हमें देखिए को स्टेट देखी जाऊँ उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली देखी जाऊँ यमुना, द लाइफ लाइन फॉर द दिल्ली एंड द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया. आगे नहीं कोठी मिट्टी गंगा सहित प्रयागराज, कोठी इलाहाबाद पाखे. अपर कोर्स हमें देखिए हिमालय उत्तराखंड जाऊँ, मिडिल कोर्स लोअर कोर्स जाऊँ गंगा. यार ट्रिब्यूटरी मध्य बहुत सारा ट्रिब्यूटरी रही है, एंड हियर इज द ट्रिब्यूटरी. यदि एठी देखिए यमुना आसुची पैरेलल हेकि आसुची एठी इलाहाबाद पाखे मीट करिवो, किंतु यमुनार ट्रिब्यूटरी होची किए? These are the right bank tributary of Yamuna. The most important right bank tributary is Chambal. Chambal ର tributary होची बानस, बानस ର tributary होची लूनी. Chambal दीटा river मिसिक हुए काली सिंध एंड पार्वती. किए? काली सिंध एंड पार्वती. ता व्यतीत तमरा आसीबो सिंध, केन, बेटवा, दे आर द tributary of Yamuna. सिंध, केन, बेटवा और सबुठु फास्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एठी हेतला केन एंड बेटवा लिंक हेतला, जोथरे गोटे डैम तयार हेतला, ता ना होची धोधाम डैम. कोन पई? Because a region को पानी दवा. को region को? The drought prone region of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh border region. What is the region? Anybody? ये कहे बता को बुंदेलखंड region. What? The बुंदेलखंड region is a drought prone region. से एरिया को irrigation दवा पाई केन एंड बेटवा हमें करते ले. केन is a surplus river, बेटवा is a deficit river. Chambal is one of the most cleanest river of India, famous for Irrawaddy, not for Gharial. आउ कौन पाई? The कौन पाई famous? के कहिबो? किए कहिबो? Why the Chambal is famous? Chambal is also famous for the what? Gharial. Chambal is also famous for the badland topography, for the ravines, Chambal upre कोन अछि? गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, then तमरो what आ गोटे अछि तमरो कोटा बैरेज,
एंड आउ गोटे अच्छी सवाई मान सवाई एमती गोटे किसी करके अच्छी सो दैट वुड बी देयर सो बहुत सारा आम देखा दैट मीन्स बहुत सारा आप डैम्स रही दिस इज द लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान ये पटे रीजन आम देखा राइट ये पूरा रिवर रही देखा हाईली अर्बानाइज रीजन रही राउतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट से पाखे रही कोटा पाखे राउतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट हो समस्ते नेक्स्ट आस दामोदर रिवर अच्छा 1 मिनिट बस टिके 2 मिनिट ब्रेक नवा 2 मिनिट्स ब्रेक देन आई विल बैक अगेन 1 मिनिट ब्रेक बेसी नहीं राइट तो दामोदर रिवर आम देखी जो दामोदर रिवर रही देखा राइट तो दामोदर रिवर को आसवा आम ना दामोदर रिवर जब आम देखा दैट इज मैथन डैम रही दामोदर रिवर ऊपर ओरिजिन फ्रॉम द छत्तीसगढ़ रांची दैट इज रांची प्लेटू रू रही सॉरी झारखंड रू ओरिजिन है नॉट छत्तीसगढ़ फ्रॉम द झारखंड रांची प्लेटू रू ओरिजिन होची दामोदर फ्लोइंग थ्रू द रिफ्ट वैली एंड तार ट्रिब्यूटरी हूँ अजय झारखंड वेस्ट बेंगल लेके जाऊँगी एंड मीटिंग विथ द भागीरथी जहाँ कह हुगली रिवर
एथरे तमरो तलिया डैम रही देन गंगा तार ट्रिब्यूटरी जदि हम देखिए रिहांत डैम गंगा उपर जदि रिहांत डैम्स रही रिहांत उत्तराखंड रही तेहरी तुम समस्त जान भागीरथी उपर रही फराक्का बैरेज वेस्ट बेंगल में देखी नर्मदा उपर में डैम देखा नाउ वी विल कम्स टू द डैम्स तो जी आम डैम्स देखा जदि आम इंपोर्टेंट डैम्स को आसवा दैट मीन्स वी आर कमिंग टू द इंपोर्टेंट डैम्स तो मैथन डैम रही झारखंड रे वेस्ट बेंगल जी आम देखा दामोदर रिवर उपर तालिया डैम्स झारखंड रही भी दामोदर उपर गंगार ट्रिब्यूटरी उपर तेहरी रिहांत उपर रही रिहांत तुम जान सोन रिवर उपर रही रिहांत जहाँ गोविंद सागर डैम बोली कहुए फाराक्का रही तुम बट गंगा उपर क्लोज टू आम कह वेस्ट दैट इज वेस्ट बेंगल रही क्लोज टू बांग्लादेश नर्मदा उपर जी आम देख शारदा सरोवर इंदिरा सागर डैम रही मध्यप्रदेश ओमकार सागर रही डैम्स क्वेश्चन आसूँ तुम जदि आम देखा डैम्स क्वेश्चन आसूँ राइट तो मैंने आपको बिल्कुल भी मिस करिवो नाही डैम्स आल्सो प्रीलिम्स रे क्वेश्चन आसूची गोदावरी ऊपर जदि हम देखा पोलावरम्स एंड दैट इज व्हाट काडाम डैम्स रही तेलंगाना रीजन रे महानदी ऊपर जदि हम कहबा कोलाब डैम्स रही एंड कोलाब छाड़ दिए हीराकुद को नहीं कावेरी ऊपर जदि हम देखा कृष्णराज सागर रही मेटूर्स तमिलनाडु रही दिस इज कर्नाटक प्लस आ ऊपर कौन कहती मु मेकाडाटू प्रोजेक्ट कर्नाटक करूची मध्य मु सेटा तुमको कहिछि देन अदर जदि आम कह दैट इज भाखरा नंगल समर रही सतलुज उपर एबे न्यूज रे थिला कारण बिकॉज ऑफ द फ्लड ऑफ पंजाब फ्लड जो न्यूज रे थिला हीराकुद डैम ओडिशा महानदी बिकॉज ऑफ न्यूज रे थिला तेहरी दैट इज द लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया एंड भागीरथी रिवर उपर रही बट लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज हीराकुद बट तेहरी होची सबुठु हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया दैट वुड बी द तेहरी डैम्स दैट विल बी योर तेहरी डैम्स राइट ये थिला हमर डैम्स थिला तो ये डैम्स मु दही देन वी विल कम्स टू द वाटरवेज ऑफ इंडिया देखो वाटरवेज ऑफ इंडिया मध्य इंपोर्टेंट टॉपिक होते राइट इंपोर्टेंट टॉपिकटा तो वाटरवेज तो आम लगभग अल्प बट 1 आवर लगे हमको सारे दैट मीन्स लगभग आम सारी देचे 1 आवर लगे खत्म करने आपको 3 घंटार सेसन रहा पूरा कंप्लीट हो तो मु कहली अगेन मु तुमको कहूँ कि जो आमर पीडीएफटा तुमको कौटी मिल जाव ओएस मेंटर टेलीग्राम चैनल रे तुमको पीडीएफ्स मिल जाव तो नेशनल वाटरवे 1 गंगा उपर रही नेशनल वाटरवे जदि देखा केतेटा नेशनल वाटरवे रही इंडिया रे तो इंडिया रे जदि रही टोटल हूँ 116 तो टोटल वाटरवे जदि आम देखा इन इंडिया टोटल वाटरवे हूँ 111 रही अकॉर्डिंग टू 2016 नेशनल वाटरवेज एक्ट ताधर ओडिशा रे जदि आम देखा ओडिशा रे 6टा रही ओडिशा रे रही तुम 22 23 14 64 96 एंड 5 ताले ओडिशा रे केतेटा रही 5 96 64 14 22 23 ये सब ओडिशा रे से भितर जदि आम देखा सब लॉन्गेस्ट वाटरवेज कोटा नेशनल वाटरवे 1 जोटा गंगा उपर रही आम देखा इलाहाबाद टू नहीं देखी सॉरी आम कहवा व्हाट वाराणसी टू नहीं जदि आम देखा पूरा कोलकाता तो यहाँ इलाहाबाद टू एक्चुअली नहीं जाए नॉट वाराणसी इट वुड बी फ्रॉम द इलाहाबाद तो इलाहाबाद टू जब कोलकाता यहाँ तुम नेशनल वाटरवे 1 जोटा कि 1620 किलोमीटर देन ये साडिया टू आम कह धुबरी साडिया टू धुबरी दैट वुड बी व्हाट 891 जोटा देखो नेशनल वाटरवे 2 दैट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट दिस वुड बी 1 दिस वुड बी 2 then you will have national waterway 3 जदि हम कहबा कोलाम टू कोटायम that would be 3 national this is artificial आपको हमें केनाल बोली कहा जाए आपको यूपीएससी ऑलरेडी पचारची 4 जदि देखिबो that means from काकीनाडा टू पुडुचेरी this is the national waterway 4 this is third longest जदि हम देखो this one is the third longest 1078 kilometer long this is the third longest waterways of India नेशनल वाटरवे 5th रही ब्राह्मणी रिवर ओडिशा नेशनल वाटरवे 6 रही बाराक रिवर मणिपुर तो ये हूँ इंपोर्टेंट किसी नेशनल वाटरवेज रही तो ये तुमने देखिपर ये देखिपर नेशनल वाटरवेज 1 गंगा उपर रही 2 रही 3 रही 4 5 ये सब मुझे जदि आप डिटेल दरकार तुमने डिटेल पढ़ी पार राइट 1 रही गंगा उपर 2 रही ब्राह्मणी उपर 3 रही तुम 3 एपट रोर्थ रही 5th रोशा 6 तुम मणिपुर बाराक रिवर उपर ये हो कवर खत्म एवरीवन ये बुझा पड़ नेशनल वाटरवे ओडिशा रे जदि तुमको कह 96 देखो ओडिशा रे मु बहुत थर तुमको पढ़ाई मु कही 22 23 14 14 कौ रही किए कह 14 कहाँ पर रही हाँ 14 कहाँ पर रही किए कह फटाफट फटाफट कह फटाफट कह
এটা আমি বহুত থর ডিस्कस করিছো মধ্য हा कि नहीं राइट तापन सेपरेट कंटेंट मध्ये दियाइछि जो मन को ओडिसा ज्योग्राफी दरकार से माने ओडिसा ज्योग्राफी देखिथिबो सेपरेट कंटेंट दियाइछि जमते कि तमरो नेशनल वाटरवे 5 हमर ब्राह्मणी रिवर ऊपर रहिछि 96 रहिछि तमरो सुवर्ण रेखा ऊपर 66 रहिछि तमरो महानदी ऊपर देन 14 रहिछि यदि हम कहिबा व्हाट तमरो बैतरणी ऊपर हाँ 14 रही बैतरणी उपर 22 एंड 23 जदि आम देखा 23 हूँ बुढ़ा बालक एंड 22 हूँ तुम व्हाट बैतरणी एंड 22 हूँ तुम व्हाट विरूपा दैट वुड बी विरूपा तो ये पूरा वाटरवेज आम देखीदे देन आम आसवा महाराष्ट्र किसी आम देखा देन वी विल कम टू वाटरफॉल देन आसवा आम वाटरफॉल को आसवा द वाटरफॉल ऑफ इंडिया तो वाटरफॉल्स जदि आम कहवा तो दीज आर द केतेरा वाटरफॉल इंपोर्टेंट वाटरफॉल्स देखा सब वाटरफॉल्स आम देखानी द इंपोर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया कारण से एथरे ओपीएससी रा गोटे फेवरेट टॉपिक होची से वाटरफॉल रू क्वेश्चन पचारुची एंड द वाटरफॉल इज दैट इज व्हाट Athirapalli what Kerala that will be Kerala that will be there Jawfall Karnataka this is what Saravati river Simoga districts the fourth this one is very important right Chitrakoot waterfalls that is what Satpura region this is not Satpura region this one is wrong this one Chitrakoot waterfall is over what over here Indravati this would be over Indravati the Niagara Fall of India this is also in what in here would be Bastar region in Bastar region in the Bastar region there is what Chitrakoot waterfall this Chitrakoot waterfall is over Indravati that would be over Indravati river and this is also called Bastar region also called as the what Niagara Fall of India also called as the Niagara Fall of India बोली कहा जाए चित्रकूट को correct छत्तीसगढ़ जदि अच्छी आम देखीदेवा दैट इज ऑल्सो देयर देन जदि आम देखा राइट बाकी छोट छोट आम देखा नहीं छोट छोट बिल्कुल भी देखा नहीं ना उत्तराखंड को जदि आसवा दैट इज व्हाट जोगिनी फॉल्स केम्प्टी फॉल्स मध्य प्रदेश दूध सागर वाटरफॉल दिस इज वेरी इंपोर्टेंट दूध सागर नर्मदा जबलपुर एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द व्हाट धुआंधार वाटरफॉल्स दूध सागर वाटरफॉल्स एंड धुआंधार वाटरफॉल दीटा जाक रही तुम क्या नर्मदा उपर बेड़ाघाट पाखे जोटा मुझे कहती पूर्व देन रानील फॉल जबलपुर पाखे रही तो खास कर जबलपुर पाखे बहुत सारा वाटरफॉल्स तुमको देखा तो धुआंधार वाटरफॉल्स धुआंधार कथा कही बेड़ाघाट कथा कही ये सब देख कौटी नर्मदा उपर यहाँ बहुत थर क्वेश्चन पचार छत्तीसगढ़ चित्रकूट ऑलरेडी नाइग्रा फॉल ऑफ इंडिया कही इंद्रावती रिवर्स कथा कहीदे तुमको देन राइट देन ओडिशा रे आसीबा ओडिशा रे सबुठ इंपोर्टेंट सब खंडाधार कोठी होछि त सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया सुंदर इट इज दिस इज नॉट खंडाधार बरहई पानी दिस वुड बी नॉट करेक्ट इट दिस वुड बी नॉट सेकंड द सेकंड वुड बी बरहई पानी that would be Barhai pani is the second not Khandadhar Barhai pani in what Mayurbhanj in Mayurbhanj so that would be second in Mayurbhanj Simlipal that would be second not Khandadhar in Sundargarh in what Sundargarh so that would be so that is why correct myself right इसको थोड़ा correct कर लेना the second highest fall is not Khandadhar that would be Barhai pani what Mayurbhanj that would be Barhai pani Mayurbhanj now we will come Jharkhand in Jharkhand that is Handru Fall बहुत थोड़ा मुझे कही many times I have said that Handru Fall over Subarnrekha river and that is the Dasam Fall then West Bengal that is what Durgapur Fall that would be Durgapur Falls of the Durgapur then Assam river and that is this one OPSC has asked earlier OPSC agru madhya prelims re pochachi that is what Noakhai that is what Noakhali Kai Fall Meghalaya এটা পচারছে the highest falls in India one of the what highest falls in India that what Noakhali Kai Falls এটা OPSC already পচারছি but this one is not what Assam no this is in Meghalaya this would be in Meghalaya so this is the list of waterfall it has been given the list of waterfall is here
in the Jharkhand, in Odisha, everywhere the list of waterfall is there. You can have this one, right? You can have this one. Now after the waterfalls, we will comes to the mountains of India. Now we will comes to mountains of India. In the mountains of India, we have discussed the Himalaya. We have discussed the Himalaya. As we have discussed the Himalaya, now we will come to the mapping part of the mountain of India with the highest peak. फटाफट हम देखिबा मु एठी कहतली डाफला मेरी आवर मिसमी, then Patkaibum, Naga, Mani, Mijo, Blue Mountains. That is the Blue Mountain. Here is the Blue Mountain. The Lushai hill also there. Blue Mountain and Lushai. And what? Lushai. So that is in Mizoram, Blue Mountain. Garo, Khasi, Jaintia, Miki range also there. Patkai Boom also there. So these are the, again I repeat, Dafla, Miri, Avor, Mismi, Patkai Boom, Naga, Mani, Mijo, Blue Mountain. ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ ନିଜ ନିଜର କ'ଣ କରିବ बाराई रेल also बाराई रेंज also there in the Assam. जे जहार मैप रे ओपन करिवो अपने अपना जो मैप है उसमें देख लेना, राइट. You have to watch in your respective what that is a mapping book. You have to watch there. चले next. So this side mountain is done, Himalaya is done. Now we will come. Now Shillong, that is Shillong plateau. Here is also Shillong plateau. The highest peak of Meghalaya is the Shillong peak. The Meghalaya jodi ame dekhiba, the highest peak of Meghalaya also the Shillong peak. In what? Here would be the Shillong peak. That is the Shillong peak is that. This would be Aravalli. The Aravalli Guru Shikhar, that is the what? And the Mount Abu. Two also there. Mount Abu the second highest. Guru Shikhar also the highest. Then here would be the Girna range. Western Ghat passes through 6 states. Ke 7 hochunti Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala.
ଆସିଗଲା ଆସିଲା ଆସିଲା देखली 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 वेस्टर्न घाट को रिपीट करी ओके वेस्टर्न घाट को रिपीट करी ओके डन डन ओके आई विल रिपीट वेस्टर्न घाट को आउथ रिपीट कर दूची मु आई विल रिपीट फ्रॉम देयर तो वेस्टर्न घाट जदि मु कहबी वेस्टर्न घाट इज पासेस थ्रू द 6 स्टेट्स वेस्टर्न घाट जदि देखिबा 6टा स्टेट्स देखि जाए वेस्टर्न घाट इज अ ब्लॉक माउंटेन नाउ इट्स ऑडिबल नाउ इट्स क्लियर ऑडिबल टू ऑल it's audible to all वेस्ट मेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो एंड पीडीएफ पाओ नाउ इट्स ऑडिबल टू ऑल वेस्टर्न घाट जदि मु कहबी वेस्टर्न घाट पासेस थ्रू 6 स्टेट्स राइट थैंक यू जदि हम देखो वेस्टर्न घाट तुम रही अगेन मु कहूँ देख तो वेस्टर्न घाट पासेस थ्रू तो वेस्टर्न घाट जदि देखो फटाफट मु कहूँ देख वेस्टर्न घाट इज ए ब्लॉक माउंटेन इट्स ए व्हाट ब्लॉक माउंटेन इट्स ए यूनेस्को हेरिटेज साइट इट्स ए व्हाट यूनेस्को हेरिटेज साइट इट्स ए ब्लॉक माउंटेन पासेस थ्रू द 6 स्टेट्स 6टा स्टेट्स देखी जाए सेवन होउछंती गुजरात सेवन होउछंती महाराष्ट्र दे आर आल्सो गोवा दे आर कर्नाटका तमिलनाडु एंड केरला तो ये हूँ 6टा स्टेट्स देख वेस्टर्न घाट थाए थरे यूपीएससी पचार इट्स ए व्हाट ब्लॉक माउंटेन ये हूँ गोटे कौन ब्लॉक माउंटेन हाईएस्ट पिक किए आनाईमुडी कौन रम आनाईमुडी केरला रे अच्छी अन्नामलाई हिल उपर अच्छी वेस्टर्न घाट इज ए सैचुरेटेड इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट यूनेस्को हेरिटेज साइट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स दिस इज सैचुरेटेड इकोसिस्टम ऑफ इंडिया विथ द सेकंड हाईएस्ट पिक जदि आम कहबा आफ्टर आनाईमुडी दैट इज व्हाट आम एसबो टू डायबेटा जोटा कि वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मीटिंग पॉइंट ना वेस्टर्न घाट पर जदि आम देखा इंपोर्टेंट होची हरिश्चंद्र रेंज जार हाईएस्ट पिक होची कालसुबाई बालाघाट रेंज महाराष्ट्र जदि आम देखा अजंता रेंज एंड सातमाला रेंज ये सब महाराष्ट्र देखा देन आसो तुम सातपुड़ार गोटे पार्ट होची किए सातमाला आउ गोटे पार्ट होची गविलगढ़ आउ गोटे पार्ट होची महादेव आउ गोटे पार्ट होची काईमूर आउ गोटे पार्ट होची आम कहबा व्हाट रामगढ़ आउ गोटे पार्ट होची राजमहल तो ये पूराटा हूँ लंबी एमती तुम सातपुड़ा से कहुए सातपुड़ा बा 7 हिल्स 7 मीन्स 7 पुड़ा मीन्स हिल्स एंड दैट इज व्हाई दिस इज सातपुड़ा द 7 हिल्स द सातपुड़ार हाईएस्ट पिक हूँ धूपगढ़ व्हाट धूपगढ़ दैट इज धूपगढ़ द हाईएस्ट पिक ऑफ सातपुड़ा एंड द हाईएस्ट पिक ऑफ विंध्या इज गुडविल पिक इज व्हाट गुडविल पिक दैट इज व्हाट गुडविल पिक द गुडविल पिक is the highest peak of Vindhya तो जदि हमें विंध्या रे देखिबा that would be Goodwill that will what Goodwill and एटा रे तमरो धूपगढ़ it would be धूपगढ़ in एटा पचारची ओपीएससी एटा ओपीएससी दी थर पचारची ध्यान से देखिबो वेस्टर्न घाट रो कहली ईस्टर्न घाट रो जदि देखिबा हमें ईस्टर्न घाट रो it would be आरोयाकोंडा it would be आरोयाकोंडा कना हमें समस्त जानते it would be but महेंद्रगिरी पर जदि आरोयाकोंडा न्यूज रे ऑप्शन रे थाय देन गो फॉर इट right so that would be there ये राजमहल हिल एंड एठी देखि परिबो गारो हिल्स इन बिटवीन देयर इज व्हाट माल्डा गैप इन बिटवीन देयर इज माल्डा गैप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो एवरीबॉडी नो टू मतलब शुड नो दैट वंस के बिटवीन दिस राजमहल हिल एंड गारो हिल दिस इज माल्डा गैप थ्रू which the river Ganga is crossing and the river Brahmaputra is crossing so both the rivers is coming through the Malda gap and that is why I said that this one is the part of Peninsular of India in the earlier time of the class के जो starting में मैंने ये कहा था right is not it this is correct right is it fine to all so now we will come to the other hills are there would be Javedi there would be Savoy so Javedi Savoy but there are small hills of Tamil Nadu Javedi Savoy in Tamil Nadu Nallamalla hills in what in your what Andhra Pradesh that would be in Andhra Pradesh but Cardamom hills also there then first it would be what Nilgiri then Agasthamalaya then Annamalaya then Cardamom also there these are the hills so these are the hills of India now comes to the important peaks we have done it the important peaks of what Himalaya we done it in the earliest times when I was going through the Himalaya like your what Karakoram the highest peak of Karakoram is K2
The highest peaks of Nanda Devi, the highest peaks of Uttarakhand is the Nanda Devi. The highest peak of Himalaya is what? That would be Nanga Parvat is the highest westernmost highest peaks of Greater Himalaya. जदि आम देखा ध्यान से शुणव नंगा पर्वत is the highest most peak of west what Greater Himalaya in the eastern part रे Greater Himalaya सब highest peak होची किए तमरो नामचो बरुआ मिडिल रे होची किए तमरो तमरो रहबो माउंट एवरेस्ट रहिची then Loseth रहिची Makalu रहिची Kanchenjunga is there is what Annapurna also there, Dhoolagiri is also there, so much peaks are out there. Then apart from that जदि आम peaks को देखा here is the important peaks. Then Parsapnath जदि तुम देखो the highest peaks of Jharkhand. माल्यगिरी ओडिशा रे रहिछि समस्ते जानते देवमाली माल्यगिरी ये सब रहिछि आनाईमुडी ये सब आम देखि राइट मुलायनगिरी रहिछि कर्नाटक रे ब्रह्मगिरी रहिछि तमर अगेन इन व्हाट कर्नाटक रे आनाईमुडी केरला रे रहिछि राइट डोडाबेटा तमिलनाडु रे रहिछि हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु महाबलेश्वर कालसुबाई जोटा म तो कहथले कालसुबाई पीक महर गोरखनाथ दैट गोरखनाथ इज अ गिरनार हाईएस्ट पीक धूपगढ़ म तो कहथले महाराष्ट्र एंड एठी दिया जायनी एटा धूपगढ़ कहार रहिछि बिंध्यार बट गुडविल पिकटा एठी दिया जायनी जोटा कि तमरो कार बिंध्यार पिकटा एटा सातपुड़ा धूपगढ़ कार सातपुड़ा गुडविल दियानी गुरु शिखर दियाइछि ये पूरा तमरो देई देछि मु अगस्त्यमाला राइट करेक्ट एवरीवन ये मैप को देखि करि परिबो राइट डन एवरीवन आपको देखि हि जिवो so these are the peaks now we will comes to the Andaman and Nicobar detail टिके देखिबा हमें गारो खासिया जयंती हिल रो हाईएस्ट पीक होची तमरो Shillong peak that would be what Shillong peak the highest Nok Creek mountain ro अछि Shillong peak Nok Creek ro highest peak होची Shillong peak the highest peak of Garo Khasian Jayantia चले now Andhra Pradesh that would be Papikonda so number 1 Andhra Pradesh in Andhra Pradesh you will have Papikonda in Andhra Pradesh you will have what in Andhra Pradesh you will have other mountains that I would say Aroyakonda in Andhra Pradesh you will have Aroyakonda what Aroyakonda and Andhra Pradesh you will have Aroyakonda now comes to Andaman and Nicobar in the detail Andaman Nicobar is also very important यहाँ पे questions आपको मिल जाएगा you will have questions from the Andaman and Nicobars बहुत डिटेल्स रे हम देखिबा Andaman Nicobars को चलो फिर Andaman and Nicobar जदि तमे देखिबो here is your what टिके मु ध्यान से देखिए दिए तमनको Andaman and Nicobar groups टिके फटाफट let me go through here you can see these are the Nicobar groups and these are what Nicobar groups the Indra point the southernmost point of India in terms of mainland ro jodi dekha the mainland of India that would be Kanyakumari in the mainland of India Kanyakumari is the southernmost part of India but when it comes to the overall India that would be Indra point Great Nicobar Island project chalichi then would be Little Andaman then it will be half Car Nicobar ପରେ ଯଦି आप देखा फास्ट होची तमरो नॉर्थ अंडमान सेंट्रल अंडमान बा मिडिल अंडमान देन साउथ अंडमान देन आसबो तमरो लिटिल अंडमान this is very important ताले 10 degree channel is between Little Andaman and Car Nicobar this is very important majority पिला खाली मन रखे चंती they have only remembered that this is the Andaman and Nicobar majority have remembered this is Andaman but in precise it would be Little Andaman and Car Nicobar in between there would be 10 degree channel in between there would be 10 degree channel right so now if I zoom it let me zoom it so if I comes to here this is the Coco channel that separates India and Myanmar this separate what India and Myanmar this is separate this Coco channel that separate India and Myanmar then it will have North Andaman मेरे को थोड़ा बैठना पड़ेगा right then you will have what so this is you can say the North Andaman the Middle Andamans here is the Barren Island you can see the Barren Island recently volcanic eruption took place John Lawrence Island Havelock Nail and this Havelock and Nail is been redefined is been renamed then ध्यान से सुनियो this island is renamed which island is renamed this Nail Island is renamed as the Sahit Deep as what
it would be Sahit Deep, and this one Havelock is Soraz. It's what? Soraz Deep. This one is Soraz Deeps. Ross Island, and the Ross Island is named after the Ross Island is named like Netaji. It's a what? Netaji. Netaji. That means the Ross Island is named like Netaji Island. So Ross Netaji Hapsoraj. So Henry Island, Outrons also there. James Outrons thila samaste jancho tanko naam se rate haichi. Then here would be North Sentinelese, South Sentinelese. These are the islands jodi hum dekha Andaman Nicobar, and here is the barren island, the most active volcano and the only active volcano of India. But आ पाखरे बाराटांग मध्य अछि जदियो एठी देखा जायनी बाराटांग आल्सो दैछि बाराटांग मध्य तमरे एठी जदियो दिया जायनी but you can interview island मध्य सेठी देखि परिबो. Then you will have Duncan Passes. Duncan Passes जदि हम देखिबा that would be South and Little Andaman भितर रहिछि Duncan Pass, and the 10 degree रहिछि हमर Little Andaman and the Car Nicobar. Then we will have here Great Nicobars. In the Great Nicobar, Indira Point is here the 6 degree channel. That would be what? 6 degree channel. That would be what? 6 degree channel. Right? It would be 6 degree channel. So this is how the mapping of Andaman Nicobar, क्योंकि यहाँ से आपका what question आ जाएगा. But now the question will come from here, from the what? Great Nicobar Campbell National Park. This is very important. Now UPSC continuously they have been asking from the Great Andaman what Nicobar Islands. So from here they have been asking questions. This is the Galathea Bay. Galathea Bay is very important for the what? Roof turtle, giant turtle. This is very important. Galathea Bay is a what? Eco-sensitive zone, and here is the Galathea National Parks. Here is Campbell Bay. Campbell, here is what? Campbell Bay, because they will ask you where is the Campbell Bay, where is Ross Sea. So they will ask you. This is Great Nicobar, and there is the Campbell National Parks, and here in the Galathea Bay the International Transshipment Project is happening here. The International Transshipment Project, that is what? The second International Transshipment Project, and here is Indira Point, the Great Nicobar Development Project जोटा चलीची, and ताकू नहीं कि बहुत सारा protest मध्य होची तम मने जानी चो. आगे नहीं. That is why so much of protest is happening. So here you have to remember, this is what? Prananath. This is what? The that is what? Panjapa Bay. This is Panjapa Bay. This is Galathea Bay. This is your Campbell Bay. This one is very important. Here you can see that is the what? Ganges Harbor. There is a Ganges Harbor, and this one is very important. That is what? St. George Channel. I know many and the 99% candidate have not gone through before what is the St. George Channel. The St. George Channel is here, Little Nicobars and the Great Nicobar. In between there is a channel called St. George Channel, which is very important. अगर आपने पूछ लिया ना यहाँ पे किसी को भी तो दिक्कत हो जाएगा फिर. So you have to remember the St. George Channel. What? The St. George Channel is here. Then if I comes to here, it would be Little. So this Little Nicobar and the Great Nicobar is been divided through the St. George Channel, and here the small islands are there. They have been divided with the Sombrero Channel, but Sombrero Channel. Sorry, Sombrero Channel. So this is the Car Nicobar. Here is the Car Nicobar. That puts what? Car Nicobar. Here is a Little Nicobar, and this is the Great Nicobar. So how they have been? That is what? Nankoiri. That is Komata. This is what? Chal. So these are the islands are there. So you have to इसको भी थोड़ा देख लेना mapping के. This is important. Now we will comes to, so this Andaman Nicobar mapping is done. Now we will come to Lakshadweep. Correct. Right. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡୁଛି. हाँ ମୁଁ କହିଛି ବହୁତ ସାରା ତମମାନଙ୍କୁ कंटेंट दियाउची. स्टडी आईक्यू रो टेलीग्राम चैनल अछि. अदरवाइज माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल को जॉइन करो. तुम फ्रेंड्स जेते सांग सती अछि मध्ये कहि परियो. कोन कहितली मोर टेलीग्राम ओएस मेंटर. कोन कहिछि मु? वी आर द मेंटर. ओए दैट मींस मेंटर. ओएस मेंटर. सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल जोठी तुमनको बहुत सारा एमसीक्यू डेली कंटेंट तुमनको मिल जबो. चलो फिर लक्षद्वीप रो कैपिटल काभारती देखि परबो समझते. एंड हियर इज द मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल.
divides Minicoy and आमे कहबा तब पर ये देखिबा Minicoy, that means Lakshadweep and Minicoy को divide कुछ 9-degree channel which is also separates काको Maldives and India, Maldives and India, right? ये रहइबो तमरो ठीक अछि. These are the छोट छोट तम माने देखि देबो बहुत important part पूरा रहै छी. Then we will comes to Andaman and Nicobar's. Andaman Nicobar's को मु डिटेल देखि छी. 572 islands रहै छी कोठी ना बे ऑफ बंगाल रहै छी. Andaman Nicobar's से केते अछि 572 islands, 38 are habitables. Andaman Islands Nicobar Islands रहै छी. ये तुमको important Andaman Sea, Bay of Bengal रखि छी. कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, जार कैपिटल वर्तमान पोर्ट ब्लेयर नहीं कोन हे जाई छी. के कहबो फटाफट के कहबो? Anyone who, what is the capitals of what Andaman and Nicobar right now? This is not Port Blair, right? The name is been changed. What is topography? The Mount Harriet, Andaman's the highest peak of what? Mount Harriet, the highest peaks of Andaman and Andaman's, right? And not I would say Nicobar's. Strategic important because close to Malacca Strait is there. This is close to Malacca Strait. And Bay of Bengal रही तुम इकोनॉमी रे टूरिज्म, फिशिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री बहुत सारा देखा बीचेस अच्छी. गांधी सागर सेंचुरी रही, रॉस लैंड अच्छी, महात्मा गांधी रही तुम इवन आम कह कौन ये रही कौन रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क सहित गांधी सागर रही, सैडल पीक रही एंड दैट इज व्हाट सैडल पीक आल्सो दैट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क रही. जरुआ रही. ट्राइब्स जदि आम देखा अंडमानीज, निकोबारीज, सेंटलीज, जरुआ ये सब तुम बहुत सारा इंपोर्टेंट ट्राइब्स रही. पीवीटीज सारा पीवीटीज रही एंड सब इंपोर्टेंट पीवीटीज जदि आम कह आउ गोटे किए रही किए कह तुम विजयपुरम्स कौन हो श्री विजयपुरम्स, दैट इज व्हाट श्री विजयपुरम्स. अच्छा जदि आम ट्राइब्स कथा देखा अंडमान निकोबार जो ट्राइब्स जदि आम देखा देखे मुझे ट्राइब्स गोटे देछि कि नहीं, अदरवाइज मुझे कहीदेवी ट्राइब्स देछि कि नहीं. ओके नहीं तो अंडमान निकोबार मु ट्राइब्स जदि कहबी देख ट्राइब्स ऑफ अंडमान निकोबार होची अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, जरुआ, and I am also forgetting one most important names. बहुत बढ़िया नाटा गोटे अच्छे. I am forgetting that one. श्री विजयपुरम is the capitals. भूली जाऊँ मु यार एते समय कंटिन्यूअसली पढ़ेले ओबियसली भूलिबो मनीष. Sompen, it's a what? Sompen, it's a Sompen, it's a what? Sompen. Sompen tribe, the most vulnerable tribes of Great Nicobar जदि आम देखा तो ये इंपोर्टेंट रही. Sompen tribes, what? Sompen tribes रही. इकोनॉमी जदि देखिए मैंने फिशिंग करके चलते एंड द मोस्ट डेंजरस ट्राइब इज योर व्हाट? द सेंट्रलीज ट्राइब्स, नॉर्थ सेंट्रलीज. देन एयरपोर्ट कोठी रहउची देखो, दैट इज व्हाट? आगाटी, आगाटी एयरपोर्ट. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. आगाटी एयरपोर्ट टू द कोचीन ये कोठी होची? ग्रेट निकोबार. आगाटी एयरपोर्ट, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. आगाटी एयरपोर्ट इन द ग्रेट निकोबार. ये कोठी होची तमरा ग्रेट निकोबार होची आगाटी एयरपोर्ट. Lipsita also saying Sompen. Then there is what? Andaman Nicobar जदि आम देखा बायोडाइवर्सिटी, माराइन रीच. अंडमान निकोबार जदि तुमको फॉरेस्ट पचार से एवरग्रीन देखा, सेमी एवरग्रीन देखा, मॉइस्ट डेसिडस देखा, लिटोरियल देखा, दिस आर द कोरल्स देखा, राइट. आउ जदि आम देखा ग्रेट निकोबार देखा जदि आम देखा तुमको आम जो आई वुड से व्हाट यू विल हैव रूफ टर्टल, जायंट रूफ टर्टल्स विल बी देयर. Then that robber craft मध्ये तुमको देखा जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. अंडमान निकोबार इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हम कहते सुंडा हॉटस्पॉट बोली कहूचे. हाँ एक कथा मध्ये कहती लिप्सिता, एक कथा मध्ये मु कहती कि फॉर द फर्स्ट टाइम जोटा हमर 2024 जनरल इलेक्शन रे से भोट देथिले, एक कथा मध्ये मु पेड क्लास रे कहितली बहुत थोर. Now what are the major ports of India? Now we will comes to the major ports of India. In the major ports of India, now it's a time to comes to the ports of India because गोटे लेक्चर में सब सारी कहते कि मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया. इन द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया कांडला पोर्ट जहाँ को कहे कौन गुजरात रही द हाईएस्ट हैंडलिंग कार्गो कैपेसिटी जदि आम कह कांडला पोर्ट. जहाँ को कहे कौन किए कह दीनदयाल पोर्ट जोटा रही द टाइडल पोर्ट गुजरात रही. देन मुंबई पोर्ट एंड जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल पोर्ट मध्य तुम रही. मार्मा गो जदि गोवा जदि आम कह दैट इज इन गोवा रही. मार्मा गोवा
बा मार्मागो पोर्ट को गोवा रे फॉर द आयरन ओर एक्सपोर्ट पई मंगलुरु पोर्ट रही द मंगलुरु कोचिन रही कोचिन इंटरनेशनल पोर्ट एंड बिनहिंजाम इंटरनेशनल जोटा आम आम ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट केरला रही कि आदानी करी बिनहिंजाम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फास्ट इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया इन द केरला बिनहिंजाम पोर्ट इज नॉट एठी दिया जाए ना देन तुतीकोरन पोर्ट बा आम जहाँ चिदम्बरम पोर्ट कही तुमको देखा गल्फ ऑफ मन्नार पाखे चेन्नई एंड इनर कामराजा पोर्ट सो तमिलनाडु तीनटा मेजर पोर्ट रही हाईएस्ट तीनटा मेजर पोर्ट तमिलनाडु पोर्ट कल्चर हूँ एनसिएंट टाइम बिकज ऑफ चोला चोला माने जिते थे से पोर्ट बहुत थिला से एनसिएंट पोर्ट सब से आज भी तमिलनाडु पाखे बहुत सब रही आम देखा बहुत सारा रही राइट तमिलनाडु इज ग्रेट कल्चर आम कहवा कौटा द ग्रेट कल्चर ऑफ बोट मेकिंग ट्रेड कल्चर से रही आगे नहीं नेक्स्ट आस विशाखापट्टनम वाइजाग पोर्ट जहाँ कहे वन ऑफ द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पारादीप देन कोलकाता दिस इज द रिवर राइन पोर्ट कोलकाता पोर्ट हूँ रिवर राइन पोर्ट कांडला पोर्ट हूँ तुम टाइडल पोर्ट आउ गोटे पोर्ट रही कौटी ना तुमको देखा ग्रेट निकोबर्स ये तुमको अंडमान एंड निकोबर देखा तो दिज आर द 13 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया राइट द डेफिनेशन पोर्ट्स देखा मेजर पोर्ट्स देखा तो 70% ऑफ द टोटल कार्गो ट्राफिक को हैंडल करुच्ची 13 मेजर पोर्ट्स मुंबई चेन्नई कोलकाता कांडला पारादीप विशाखापट्टनम से देखा एमती बहुत सारा रही तो ये सब को माइनर पोर्ट को किए कर तुम मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट अराउंड 200 माइनर पोर्ट अच्छी ये तुतीकोरिन मेजर पोर्ट कोचिन मेजर पोर्ट आपको कैंसल कर राइट क्लासिफाइड साधारणतः ईस्ट वेस्ट कोस्ट आम रही साधारणतः वेस्टर्न कोस्ट अधिक पोर्ट थाए बिकज ऑफ व्हाट टोटल पोर्ट मेजर और माइनर मिसिक माइनर पोर्ट हूँ 200 मेजर हूँ 13 एटा मन रख राइट मेजर एंड माइनर कथा मुझे कहीदेली देन इंपोर्टेंस तुम जानच आम जो पोर्ट रही जहाँ कहते ना समुद्र से समृद्धि प्राइम मिनिस्टर कौन कहते समुद्र से समृद्धि सागरमाला भारतमाला ग्रीन इकोनॉमी ये सब करा गेटवे ऑफ इंडिया 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड 70% ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रेड ये सारा डेटा तुमको मेन्स आसो राइट आपको आम कहे नेचुरल हार्बर्स आर्टिफिशियल्स रोचे जमी चेन्नई पारादीप दी जाता आर्टिफिशियल हार्बर्स तुमको देखा सागरमाला प्रोजेक्ट्स रही देन मिनरल्स ऑफ इंडिया द पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज डन दिस इज द पोर्ट्स ऑफ इंडिया नाउ कम्स टू द मिनरल्स ऑफ इंडिया नेक्स्ट नेक्स्ट जदि आम आसवा द व्हाट मिनरल्स ऑफ इंडिया ओडिशा रे कौन देखा आयरन देखा ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ स्टील प्रोडक्शन बहुत ही एंड ओडिशा इज द नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ द स्टील एंड आयरन प्रोडक्शन ओडिशा आयरन ओर रे मध्य नंबर कोल रे मध्य नंबर 1 प्रोडक्शंस एंड क्रोमाइड तो इंडिया नंबर 1 तो ओडिशा इज नंबर 1 क्या ओडिशा सेक्शन मु ऑलरेडी कवर करछि आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द ओडिशा सेक्शन सो आई विल नॉट गो थ्रू द ओडिशा अगेन राइट एनीबॉडी वांट्स टू गो थ्रू द ओडिशा सेक्शन प्लीज गो थ्रू द my full Odisha revision sections. There you can get the everything about the Odisha related. Copper, Rajasthan, Jharkhand, that is electrical equipment production, like bauxite, Odisha, Gujarat, aluminum, gold, Karnataka, Jharkhand, jewelry and electronics. These are the metallics. Manganese, Odisha, Madhya Pradesh, Karnataka. We will for the steel alloy, all this. Again, I repeat, for join my Telegram channel, Waste Mentor, so that you will have constant update of your preparation and the value addition part will be there. Non-metallic, mica, Jharkhand, Bihar, that would be the limestone, Madhya Pradesh, Rajasthan, cement, gypsum, Rajasthan, Gujarat, fertilizer, gypsum coat use of fertilizers, and the asbestos, that would be what fireproof materials for the fireproof materials. Like these things are there. Energy in the coal. Jharkhand, Chhattisgarh, that would be also there. Jharia, now come to the coal mines. Jharia in Jharkhand, the Raniganj, West Bengals, Korba, Chhattisgarh, Singrauli, Madhya Pradesh, already I have did this. Bokaro, Jharkhand, Talcher, Odisha, this is Singaroni and Singarini in Andhra Pradesh. I have done this. Clear this one? We done it in the earlier classes. When we are going through the rock system of India, that time I did it. In the very fast page of this lecture, the initial time of this lecture, I have done it. Where is Singrauli, where is Singarini? Then iron ore, Bailadila, the largest mechanized mines of Asia in Chhattisgarh.
सिंहभूम झारखंड, बेलारी हॉस्पेट कर्नाटक, दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़, मयूरभंज केउंझर जोड़ा बड़बिल इन ओडिशा. These are the important iron ore mines. So this is very important, right? इसको ना मैच ऑफ द फॉलोइंग भी कर सकता है, वो पूछ सकता है कहीं से कि ये बायलाडेला कहाँ पे किस लिए. देयर इज बायलाडेला एंड वाज डलही राजरा. देखो एक चीज यहाँ पे नहीं लिखा गया, डलही राजरा. डलही राजरा इन छत्तीसगढ़, यहाँ पे सिर्फ कोरबा लिखा है ना, जो कोरबा है माइन है. डलही राजरा दैट इज अनदर रीजन ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज डलही राजरा. देन बॉक्साइट, कोरापुट, that is what Panchpatimali in Odisha, that would be there. Niyamgiri region, Koraput, Kandhamal, Raigada, this region is very famous for the bauxite. And Jabua, Madhya Pradesh, Belgaum and Bailatila, Karnataka regions. Sorry, Bailatila in somewhere else. Bailatila is what, where in Jharkhand, Chhattisgarh, sorry. Chotnagpur Plateau, minor bauxite reserve, but it would be Belgaum range region, Nuamudi, that would be Hospet, that region of Karnataka is having what, bauxite. But when it comes to Bailadela, Bailadela is not in Karnataka, this is in Chhattisgarh. Clear everyone? Clear to all? सबको समझ में आ रहा है? अरे बुझा पड़ुची समस्तों को, करेक्ट. देखा बहुत मेहनत लगुची कंटिन्यूअसली 3 घंटा गप्पीबा, that is challenge, and I am doing this because of your prelims. I am doing this because of our prelims. Generally I don't do this marathon section like this, what, covering whole of geography in 3 hours or the 4 hours, because it's a hectic. Now comes to gold mine, Kolar gold mines in Karnataka, Hutik in Karnataka, and Sonbhadra, Uttar Pradesh, also in there. What, Anantnag in Andhra Pradesh, there would be Anantnag in Andhra Pradesh as well. So these would be the gold mines. In Maika, Jharsuguda, that is what, Kodarma in Jharsuguda, Rajmundry in Andhra Pradesh, that would be there. बुझा पड़ुची ये जी जो तुम गोल्ड देखी आ गोटे अनंतनाग बोधे से आंध्र प्रदेश अनंतनाग, दैट वुड बी देयर. बाकी डायमंड आम जाने पान्हारे मिले, कोठी मिले, पान्हारे मिल डायमंड. पान्हारे कौन देखा, डायमंड देखा, राइट. पान्हारे कौन देखा तुमको, डायमंड देखा. कपर सिंहभूम झारखंड देखा, एंड दैट इज व्हाट, मालन, दैट इज मालंज खंड, मध्य प्रदेश. द लार्ज कॉपर माइंस देखा, एंड खेतरी, तो मध्य से उठा झाड़ मतलब खेतरी, राजस्थान. तो मध्य प्रदेश, खेतरी, राजस्थान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मालान झार, दैट इज Madhya Pradesh, and Singhbhum region, so that would be region. Then chromite, Odisha, Sukinda number 1, and Kondapalli, Andhra Pradesh, both com. ये तो largest जान जो 96% Sukinda, केउंझर districts रे तमरो होची जो Sukinda valley दुनिया रो सब मतलब इंडिया रो सब highest chromite दिखा जे 96%. Then lead and zinc कोठी देखा जो राजस्थान रे देखा जो oldest, and Rampura, that is अगूचा राजस्थान रे तुमको देखा जो. लाइमस्टोन कोठी देखा जो ऑलरेडी हमें पढ़ी छे, छत्तीसगढ़ रायपुर ये तुम मैंगलोर फाइनल तमिलनाडु ये सब देखा जो. बाकी में गुंटूर रीजन क्या कही तुमको ओडिशा रे राय व्हाट आमर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट देखा जो. ये सब ऑलरेडी हमें डिस्कस करछे. लाइमस्टोन कोठी देखा जो, लाइमस्टोन को रॉक सहित देखा जो, विंध्यान रॉक एंड कुडापा रॉक. डोलोमाइट, कुडापा रॉक कौन, डोलोमाइट्स तुमको देखा जो, ये ऑलरेडी हमें डिस्कस करके रखी छे. थोरियम कोठी देखा जो, मोनाजाइट सैंड्स कोठी देखा जो, मोनाजाइट्स सैंड हमको देखा जो, खास कर बीचेस ऑफ तमिलनाडु, ओडिशा. ध्यान से सुनिए, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. ओडिशा रो बरहमपुर डिस्ट्रिक्ट रो सब हाईएस्ट मोनाजाइट मिनरल्स थाई, वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया. आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरला सब हाईएस्ट मोनाजाइट होची तमरो साइड तमिलनाडु थिबो, देन ओडिशा, देन आंध्र प्रदेश एंड केरला. सो दीज आर द रीजन्स हमको देखा जिवो. ये बहुत इंपोर्टेंट रीजन्स. तो आपको आमे कोन करबा, nuclear power plants, that is the reactors use करके we can produce the nuclear energy. Next, steel plants, the important steel plants of India. The Bhilai steel plants in Chhattisgarh, Bhilai in Chhattisgarh, Raulkela in Odisha with England, sorry Raulkela with West Germany, Durgapur with what, Durgapur कहाँ से तमें कुछ that is Durgapur कहाँ से तमें मिसी कुछ UK से तो Durgapur, that would be UK.
that means this is very important can eta tumko pachare. So it would be Bhilai, if it would be Bhilai UK, Raulkela Germany, this would be Durgapur UK, this two, then it would be Bokaro steel plants, the largest steel plants of India, part of SAIL, this is the SAIL, and the Steel Authority of India, then ISCO, West Bengal's, Durgapur, that is what but Burunpur, Visakhapatnam, Andhra Pradesh roichi, modern day high capacity roichi Visakhapatnams. So these are there. Then private players बहुत सारा roichi, JSW roichi, Tata roichi, SR roichi, Bhushan roichi, Rashtriya Ispat Nigam Limited मध्ये roichi Visakhapatnam. So बहुत सारा private sector मध्ये roichi. So these are the private sectors तमे देखि परबो JSW विशाखापट्टनम रोचे कर्नाटक अछि JSW even आमे देखियो JSW जदि ओडिसा रे मध्ये JSW अछि टाटा मध्ये ओडिसा रे अछि तमन जानचो जामशेदपुर झारखंड रोचे ओडिसा रे मध्ये टाटा रहिछि एसआर जदि देखियो हाजिरा गुजरात प्लस आमे कहबा एसआर पारादीप रे मध्ये अछि सेंते भूषण जदि आमे कहबा ओडिसा रे प्राइवेट स्टील प्रोडक्शन अनुगुल रे रहिछि अनुगुल झार जो हमर बट केउझर बकरे भूषण देखा जबो तो भूषण आल्सो मध्ये हमको देखा जो भूषण स्टील प्लांट ये देखो छी मु स्टील हां तमरा आउट इंपोर्टेंट स्टील प्लांट अछि विश्वेश्वरया जोटा तमरा कर्नाटक रे अछि विश्वेश्वरया स्टील प्लांट वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टील प्लांट ऑफ इंडिया तो जोटा तमरा कोठी रहि छी मैच करिया पिन जदी दबो तल तमु सेटा कर्नाटक रे अछि देन मेजर कोस्टल मिनरल्स आगु यूपीएससी रो फेवरेट टॉपिक दिस इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी दैट इज इम्नेनाइट रूटाइल्स ल्यूक्सोजेंस मोनाजाइट जिरकॉन सिलिमेनाइट. So these are very important and this is the rare earth what and the coastal minerals. So when it comes to the rutiles, so Odisha is having what? Luxogens, monazite. Odisha also almost every minerals found in the Odisha coast. Zircon is also there, monazite also there, luxogens also there. That is what imnenites also there. So Odisha almost having everything, and that too the Ganjam coast is very famous for the these coastal minerals are the rare earth minerals. These are what? Rare earth minerals. This is very important topic and UPSC favorite topic, rare earth minerals and the critical minerals. The critical minerals and the rare earth minerals, they are very favorite topic, right? So that would be there. This would be for the aerospace, that would be for the titanium production. Here you can see. Now comes to the critical minerals. Now minerals, garnet, Tamil Nadu, Odisha, again Odisha is there. Again heavy minerals. So this is how Odisha ranked. Odisha is one of the highest, including your coastal minerals we are having. So Odisha minerals would be divided into two parts, coastal minerals and the mainland, right? But majority of the aspirant is not aware of the coastal minerals of India. Let's say one other day they will ask the coastal, discuss the coastal minerals of Odisha, nobody would be able to write that, despite you have gone through this one, right? Garnet, all these coastal minerals I have said. So that is why this is significant, because now you can comes to the 30 critical minerals of India, and this is very important UPSC favorite. 30 critical minerals of India. 30 out of 30 I have given 25. This 30 critical minerals of India, this is very important. Again I repeat, this 30 critical minerals of India is very important. आपको पढ़ी की जाओ prelims में बहुत important. Antimony, beryllium, bismuth, cobalt, copper, gallium, germanium, graphite, हाफिनियम, इंडिनियम, नियम जेते आसबो देखो आरो शॉर्ट फॉर्म हैला तुमको सर एते गुडा मु केमिति मन रखिबी बस जोटा मेजर को खत्म कर दिया ना. देन डू वन थिंग कि हमें कहबा जस्ट अ मिनट, जेते शॉर्टकट फार्मूला हैला जहां पे भी नियम देखे ना, ये जो देखो यूएम 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 ये सारे के सारे रेयर अर्थ यूएम यू जहाँ पे देखे ना, बस मान लेना कि ये रेयर अर्थ है. चला खत्म हो गया ना, यहाँ से तो मिल जाएगा आपको. जहाँ पे भी लास्ट पे यू लगेगा सोच लेना ये रेयर अर्थ है, राइट. उसके बाद सी फॉर कॉपर, सी फॉर कोबाल्ट, ये दोनों आ गया. तो लगभग हमने सारे कर लिया. निकल हो गया, सिलिकॉन्स तो लगभग हमने सारे कर लिया. बस थोड़ा बहुत कहीं पे बच गया. ऐसे नहीं कि आपने लिख लिया कि मैंगनीज, आयरन, कोल, वो मेजर बात है, राइट. So this is how the shortcut formula. The shortcut formula is what? That means C for copper, C for cobalt and UM. जहाँ पे भी UM अगर साइड पे आ जाए तो आप मान लेना ये critical minerals है, right? That is the short formula to remember the critical minerals of India. So this is how.
यहाँ पे UM देख रहा है कि सारे के सारे, एंड दिस इज हाउ द, जैसे कि मैंने बोला ना कि दिस इज द टेक्निक यू कैन रिमेंबर द व्हाट जिरकोनियम, कैडमियम, सेलेनियम, राइट, vanadium, टंगस्टन. दिस इज द टेक्निक यू हैव टू रिमेंबर कि अगर मतलब साइड पे UM आ गया तो हमने उसको मान लेंगे इट्स क्रिटिकल मिनरल्स. करेक्ट एवरीवन. चलो, so the critical minerals is required for the clean energy, for the EV, for the high tech electronics, for the national security. These things is required. Now we will comes to the major types of soil of India. This is the soil of India. Now we will comes to the soil of India. In the soil of India, right, the red soil, the forest, this is the red soil, and the alluvial soil is the largest soil of India is the alluvial soil, 40%. The largest soil of India is the alluvial soil. So alluvial soil 40%, then comes your red soil like about 80%, then comes your black soil like about 14%. So this is how the percent is, right? That means first is alluvial soil like about 40%, red soil 18%, black soil 14%. So these are the top 3 soils of India, right? These are the top 3 soils. This one is black, this one is here black soil, this one is here red soil, this one is alluvial soil, this one is alluvial soil. Alluvial soil is formed by whom? River. And the red soil is formed because of the oxidations, because of iron. This is the iron belt of India. As the iron belt of India, that is why the red soil found here. अरे भाई जहाँ पे आयरन ओर होगा वहीं पे तो रेड सॉइल दिखेगा. अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन है तो वहाँ पे भी रेड सॉइल दिखेगा. यहाँ पे आयरन है तो आयरन ओर दिखेगा. दैट मीन्स रेड सॉइल दिखेगा. तो जहाँ जहाँ पे जोठी आयरन अच्छी, दैट मीन्स आयरन विल ऑक्साइड, दैट विल गिव्स टू द रेड सॉइल. दिस इज सिंपल. एंड जहाँ पे रिवर है वहाँ पे अलुवियल सॉइल दिखेगा. यहाँ पे रिवर है तो दिस इज वाई अलुवियल सॉइल. यहाँ पे रिवर है तो अलुवियल सॉइल. जहाँ जहाँ पे रिवर होगा वहाँ पे अलुवियल सॉइल हो जाएगा. खत्म. क्लियर? इज इट फाइन टू ऑल? Right, now the black soil. Here is the black soil because of basalt. Because of what? Because of your basalt. In the geology of India, we learn it, the basalt, weathering, erosion of the basalt led to the formation of black soil, the most abundant soil of this region. This is also called as the Regur soil in Andhra Pradesh, the cotton soil in Madhya Pradesh, famous for the cotton cultivation, the retention, high retention capability, also called as the self-plowing soil. High moisture content will be there, least porosity is there. Titaniferous magnetite is the major reason for the black color. Titaniferous magnetite is the major reason for the black color. Is it fine? Correct, right? Next, so ये हो गया आपका. देन वी विल हैव रेड येलो सॉइल. देखो जहाँ पर रेड है ना, रेड येलो सॉइल कहाँ पे बन. इफ ए रीजन इज हैविंग रेड सॉइल एंड हाई रेनफॉल देन दैट विल गिव यू रेड येलो सॉइल. ध्यान से, हाउ टू रिमेंबर द रेड येलो सॉइल कहाँ पे होगा. इफ ए रीजन इज हैविंग रेड सॉइल एंड हैविंग हाई रेनफॉल, लेट्स से क्योंझर इज हैविंग रेड सॉइल बट हाई रेनफॉल, दैट मीन्स क्योंझर विल हैव रेड येलो सॉइल. दिस रीजन विल हैव red yellow soil. This region will have red yellow soil. Certain part will have red yellow soil. Now comes to the laterite soil. Now we will comes to the laterite soil. This is the region is having laterite soil. The dominant soil, the laterite soil. This region is having laterite soil. Why? Because for the laterite soil we need high temperature and high rainfall. What high temperature, high rainfall? Alternative wet and dry condition. Alternative wet and dry condition. So that is why alternative wet and dry condition, and that is why laterite soil जोटी बहुत वर्षा हम. For the laterite soil you need what? High rainfall, high leaching, alternative wet and dry condition. मध्य मेघालय रे बहुत वर्षा हुए, मणिपुर एपटे बहुत वर्षा हुए. laterite soil वेस्टर्न घाट केरला रे बहुत वर्षा हुए. laterite soil खत्म टॉपिक. केते इजी? इट्स अ टू इजी. एरिड सॉइल कोठी देखा जो जोटी वर्षा होने, राजस्थान रे एरिड सॉइल देखा जो जोटी जंगल अछि सेठी फॉरेस्ट सॉइल देखा जो. दैट इज व्हाई दीज आर द फॉरेस्ट सॉइल. Now comes to the soil formation. Now we will comes to the soil formation. Soil formation, parent rock, climate, topography, biological factor, times. These are the factors. Soil ru last year OPSC question पचारथिला.
last year OPSC asked a question for the soil degradation. समस्तंकर मने होछि कि नहीं? Is it fine to all that OPSC last time asked a question for the degradation of soil, right? From the degradation of soil question आसीथिला. These are the factor responsible for the soil formation. Then composition of soil रे जति हम देखा minerals देखा जो organic देखा जो air देखा जो living organism, these are the दिबो में. Then soil horizon को आसवा, these are the what? Composition of soil, these are the factor responsible for the formation of soil. Done everyone? चले. Composition of soil that will have silt, clay, sand, organic matters मध्ये देखा जो humus मध्ये देखा जो water भी देखा जो ना soil horizon को हमें देखे दो. Soil horizon, here is the soil horizon. O layer, A layer, E layer, B layer, C layer, R layer. चलो फिर देखते हैं इसको. O means what? The top layer, the organic. O for organic. A for the most fertile soils. A for what? Most fertile. Composition, there would be air, oxygen, living organism, water, organic matter and the minerals. This is the composition of soil. The composition of soil will have air, oxygen, carbon dioxide for the roots of the organism, like say for the lichen, for the mosses, I would say for the what? Rhizobium bacteria, for the legumes, thank you Sasmita. Then it will have what? Minerals, organic, water, living. ये सब हमें देखिबा. Then it comes, because देखो तम मानकर prelims अच्छी. As you guys are having prelims, that is why my responsibility is to give you the best. जेति कि देई परिबो मु, right? Next हम देखिबा what? Soils horizon जति हम देखिबा O horizon, A horizon, B horizon, C अच्छी, R अच्छी. These are the horizon. These are the what? Also importance. Soil horizon तुमको पता, the most important layer is the O layer. Here it could have E layer also there. E layer मध्ये रही जाको हमें elevated मध्ये को, elevation layer मध्ये को, transition between the A and B. That is why E also there. Though I have not included, somehow it's a skip ही जाइची, but that is also what? आमे देखिबा O horizon रही, A रही, B रही, B soft soil रही, C जोटी weathering, parent materials and R होची bedrock. तो मोस्ट फर्टाइल तुमको पचारिबो ओ सब जगह न थाए, ओ सब जगह न थाए, बट ए विल बी एवरीवेयर. देन बी आसीबो, बीटा सब सॉइल, किंतु हम कहला एठी तुमको ट्रांजिशन मु तुमको देखैछि कोन ए एंड बी भीतर के रहबो इल्यूविएशन, अर्थात लीचिंग है कि आ गोटे ट्रांजिशन लेयर विल बी फॉर्मड, राइट. तो सॉइल रो कंजर्वेशन करबा बहुत इंपोर्टेंट. केमती कंजर्वेशन करबो? काउंटर प्लाइंग करबो, टेरेस फार्मिंग करबो, शेल्टर बेल्ट करबो, आफ्रेस्टेशन करबो, क्रॉप रोटेशन करबो, मिक्स्ड फार्मिंग करबो, चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, साइंटिफिक यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, ये सब हमें करके सॉइल इरोजन को कमी परबा. ये डिफरेंट लेयर देखो. Illuviation layer, I means the leaching, because of the leachings from this top layer some of the deposited, तो এটা একটা mixed layer, that is why this is transition বা illuviation layer. Soil enrichment mu देखेनी, right? Now we will come to the causes of soil erosion. It will last time OPSC prelims रे पहुंचा था. Deforestation, overgrazing, over irrigation, industrial waste, urbanizations, mining, construction, unsustainable agricultural development, all these are the cumulative factors for the what? Degradation of soil. For the what? Degradation of soil. Correct. Then types of soil. In the types of soil we have gone through, right? That is the what? Types of soils, that is physicals, chemicals, biologicals. Like in the physical, that would be seed, okay, that erosion, soil degradation, sorry, it's a soil degradation. Soil degradation हम देखा गली इरोजन है परे,
सीट इरोजन है परे रील आगे होची तमर रील इरोजन छोट छोट देन that would be what gully erosion the large gully formation bad land topography wind erosion है परे seat erosion है परे water logging है परे compaction है परे salinity desalination है परे alkalination है परे when alkalination means what NaCl ର concentration ଯେତେବେଳେ ବଢି ଯାଏ that would be because of what capillary action that may be because of the over irrigation or capillary action then nutrition depletion that all would be the so these questions UPSC asked last time कि why soil degradation they ask soil degradation all are degradation chemical degradation physical degradation biological degradation answer देखो so 3 types of degradation last time OPSC asked this question that is why I have included right consequences देखो consequences सबको पता है कि what will be the consequences that would be lack of fertility of the soil the productivity will be reduced then aridity will desertification will be there loss of biodiversity loss of everything greenhouse will be there then causes of affecting natural vegetation now we will come to natural vegetation of India the natural vegetation of any region what the natural vegetation of a region would be shaped through the climate of that will be because of the climate so what are the factors that affects the natural vegetation of a region right कौन सी जगह जदि हम कहबा फॉरेस्ट होची तो ता पे कोन हेते क्लाइमेट so climate soils and what that means temperature soil rainfall they are the what three most important factor for the formation of natural vegetation of a region that is very important then relief topography ये सब हमें देखबा then factors affect जदि हम कहबा altitude slope drainage climate rainfall that would be also there then biotic humans ये सब factors को हम जीवा natural vegetation of India देखि दियो तो ट्रॉपिकल्स हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट एठी देखा जो एठी देखो कोस्टल रे मैंग्रोव देखा जो माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेन रे देखा जो एवरग्रीन फॉरेस्ट तुमको एठी वेस्टर्न घाट रे देखा जो अंडमान निकोबार रे देखा जो नॉर्थ ईस्ट रे देखा जो द एवरग्रीन फॉरेस्ट जदि हम देखबा द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया the evergreen forest of India is here the evergreen forest of India is here the evergreen forest is here so this is the region of evergreen of India so here is the what tropical evergreen then deciduous forest this is the tropical deciduous forest thorny forest that would be the thorny forest this would be thorny forest right thorny forest तले मु कहि दिए एवरग्रीन फॉरेस्ट काहे कि तुमको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखा जो वेस्टर्न घाट देखा जो नॉर्थ ईस्ट देखा जो अंडमान देखा जो एटा जो देखो दिस इज सेमी एवरग्रीन दिस इज व्हाट सेमी एवरग्रीन दिस इज नॉट एवरग्रीन दिस इज सेमी एवरग्रीन starting from here to here this is semi evergreen so that is why this is also very important semi evergreen Odisha is having semi evergreen and this is literal forest ए जो एटा समस्त को everybody correct नार बेसी डिटेल को जीबी मु बेसी डिटेल को जीबी नहीं हाँ फॉरेस्ट टाइप देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन तो एवरग्रीन कोठी देखा जो देखो वेस्टर्न घाट अंडमान निकोबार नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया रेनफॉल देखो मोर देन 200 सेंटीमीटर्स 250 सेंटीमीटर्स देखा जो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट्स दरकार डेंस मल्टीपल लेयर्ड एवरग्रीन रहिबा रोजवुड महोगनी एबोनी ये सब स्पीसीज देखा जो रिच बायोडायवर्सिटी देखा जो करेक्ट बहुत इंपोर्टेंट देन ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट बा मॉनसूनल फॉरेस्ट हमको देखा जो 100 ରୁ 200 सेंटीमीटर ईस्टर्न पूरा सेंट्रल इंडिया रे तुमको देखा जो टीक साल सीसाम तेंदू हाँ बेल ये सब ही जो ड्राई डेसिडस कोठी देखा द लार्जेस्ट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इज द डेसिडस फॉरेस्ट देन थॉर्नी फॉरेस्ट राजस्थान गुजरात हरियाणा पंजाब जोठी डेजर्ट टाइप ऑफ हमको लेस देन 75 सेंटीमीटर्स एथरे बाबुल आकाशिया खेजरी तमरो ये सब जहाँ रही देखा जो देन माउंटेन फॉरेस्ट हमको माउंटेन रे देखा जो मैंग्रोव तो तुमको जानो कोस्टल एरिया रे मैंग्रोव्स देखा जो जोठी हमरो सालाइन वाटर रही वाटर लॉक्ड रही डेल्टा रीजन रही साधारणतः में सुंदरी जहाँ को हम कहते राइजोफोरा हेरिटेरिया बोली कहूचे ये सुंदरबन महानदी कृष्णा गोदावरी ये सब गुजरात रे सब रीजन रे देखा जो वेस्ट बेंगल नंबर 1 गुजरात रहिला ओडिशा अंडमान महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश दे आर द टॉप 5 हमें कहबा मैंग्रोव मैंग्रोव कोठी हेते साधारणतः टाइडल एरिया रे हेता एंड क्ले रीजन रे जोठी तुमको क्ले देखा जिवो राइट सैंडी एरिया रे तो हबो नहीं तापे हाई मतलब ब्रैकिश वाटर दरकार रेनफॉल अधिक दरकार हाई ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर ये सब दरकार टाइडल एरिया मैंग्रोव फाइ दरकार
आउ कौन होता है मैंग्रोव भिविपारिटी कथा जानच न्यूमाटोफोरस कथा समस्ते जानच भिविपारिटी जो सेल्फ जर्मिनेशन न्यूमाटोफोरस जो तार थाए ब्लाइंड रूट जोटा थाए प्लस सॉल्ट एक्स्ट्रा सॉल्ट को से ग्लैंड द्वारा कौन होता है ताको रिमूव करे सेटा मध्ये हम जानिचे एंड हमर होची ओडिसा रो जो हमर भीतर कनका होची दिस इज द व्हाट सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव पैचेस ऑफ इंडिया ता व्यतीत पिचाभरम्स जोटा मु तुमको कहतली पिचाभरम्स जोटा रहिछि हमर व्हाट तमिलनाडु मध्ये इंपोर्टेंट गोटे सेटा मध्ये इंपोर्टेंट ता रहिछि एठी तुमको लिटरल स्वाम्पी देखा जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश देन क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया जति मु कहबी ना इंडिया रे साधारणतः देखो क्लाइमेट्स कोन से रीजन रो के इन्फ्लुएंस करे द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया होची लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड रिलीफ प्रेशर विंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी जदि तुमको केही पचर सिंपल ए पॉइंट को मन रखो दीज आर द पॉइंट्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया राइट नेक्स्ट हम देखबा तो ये रहबो तुमर क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया मु कहली कोन से रीजन रो दैट मींस इंडिया रो जदी क्लाइमेट्स तुमको पचरे दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया ओके देन सीजन जदी हम कहबा एठी तुमको देखा जो विंटर सीजन समर सीजन ए सब को मानसून देखिचे हम समस्त एबे मानसून चलची पोस्ट मानसून जोटा व्हाट रिट्रीटिंग मानसून हम कहबा हे जबो तो ये पूरा थिला तुमर मानसून तो तमने देखि देबो तो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉप्स मु मध्ये देई देछि एथरे तुमको देई देछि खरीफ क्रॉप्स रबी क्रॉप्स जायद क्रॉप्स तो ये क्रॉप्स भी देई देछि प्लांटेशनल टी कॉफी रबर्स ये सब देई देछि एवरीथिंग आई हैव गिवन तो राइट सब जिंस मु तुमको देई देछि एथरे देखि देबो आउ टिके तो माने जदी देखि देबो हे जो एंड लास्ट स्लाइड मु देई देछि दैट इज व्हाट ये जो तुमर दे देछि दीज आर व्हाट दैट इज द जियो हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया एटा मु गोटे देई देछि जियो हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया एथरो मध्ये क्वेश्चन आसुची जो थरे थरे देई देछि देखो फॉसिल साइट्स केते रहउची वोल्केनिक जोटा सेंट मैरी आइलैंड कर्नाटक हे गेला डेकान ट्रैप बहुत थर पचारची लोनार क्रेटर बहुत थर पचारिची ये सब मु देई देछि ताकू मध्ये टिके गो थ्रू करतबो राइट तो ये पूरा 3 घंटा रे गोटे मैराथन सेशन ने कि मु सारी देली जति कि हेई परियो जदियो मतलब पूरा डिटेल्स रे डिस्कस करबा पॉसिबल्स नहीं 3 आवर्स रे बट आई हैव गिवन मतलब ये एटलीस्ट the what we said is a quick summary of Indian geography, though it's not possible to finish the Indian geography 3 hours, but at least a quick possible way that I have covered. And thank you so much for your consistent support and watching the live session for the 3 hours, and obviously 3 hour sessions of taking this is hectic to be live. Thank you everyone for your backing, and the PDF you will get in OS Mentor channel. In the what OS Mentor, I will update with certain correction, little bit of correction here and there. I will upload. Right. So join OS Mentor Telegram channel and get the what PDF. Thank you everyone for your supports, and thank you all. Wish you all the best for the prelims, for the OPSC prelims as well, and I hope थोड़ा बहुत हेल्प करेगा मतलब दो आई एम नॉट सेइंग कि एवरी क्वेश्चंस विल कवर फ्रॉम हियर बट आई नो कि मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द अगर 3 घंटा में अगर इतना पढ़ लिया ना बहुत पढ़ लिया भाई बहुत पढ़ लिया दैट इज गुड थैंक यू सो मच लक्ष्मी थैंक यू सो मच लक्ष्मी सस्मिता दैट इज व्हाट दमयंती साउ सनु प्रसाद everyone Mutuli everyone those who joined me and that's all from the session, and hope you guys will do best and give your best and get clear this exam OPSC prelims. With this I will end the session. Thank you everyone, and good luck to all. Good luck to everyone. Keep safe and be keep motivated yourself. Do the best and clear this OPSC prelims. Then comes to the mains. Again we will be there. Thank you all.